Are you enjoying? Right? मजा आ रहा है? अभी ये इवनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब होने वाला है. अब यहाँ स्टेज पे डॉक्टर हेल न्यूबॉल को बुलाने वाले हैं. And you will have, now let me give you a little bit of background for Dr. Newball. Dr. Newball has gone to medical school from various medical school in USA which are in top category like Harvard, Johns Hopkins. And to be very honest, if I have to describe all of his credentials, I don't know how to pronounce it. Some of the things हमको मालूम नहीं वो डिग्रीज क्या मतलब क्या है. इतनी सारी डिग्रियां उन लोगों ने 28 years का स्टडी किया है मेडिकल स्कूल में. इतना रिसर्च किया है उन लोगों ने. उसने not only that, उसको he was nominated for Nobel Prize for one of his research. उसको Nobel Prize के लिए नॉमिनेट किया गया था. So ये not only that, he's a very successful MV diamond. That's even more important than other one, because and he's absolute hero of mine. Matter of fact, जब मैं पहले ऐसे फंक्शन में गया था, जब तक मैंने उनको नहीं सुना था तब तक मैं डिसाइड नहीं कर रहा था ये बिजनेस करना है या नहीं. उसको जब मैंने सुना वो फंक्शन में, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस करना है, ये करना है. क्योंकि ये आदमी को बिजनेस की जरूरत है तो मुझे उससे 10 गुना उसकी जरूरत है. So with that, help me welcome Dr. Newball as if he has never gotten that kind of welcome anywhere in the world, right? Can I count on you? Okay. So let's bring on a stage Diamonds Going EDC, Dr. Hale Newball. Thank you very much. It's good to be back in Mumbai again. Some of you folks might recall that last year in September I was here and we met in this same venue. But it's much nicer today because you've got air conditioning and it's just more comfortable. I think I have a translator who's going to be helping me. Right. Yeah. इनको मुंबई में आके बहुत खुशी मिल रही है और कुछ सालों पहले मुंबई आए थे और इसी जगह पे इनकी रैली थी, लेकिन उस वक्त एयर कंडीशनिंग नहीं थी, तो आज बहुत मजा आ रहा है और क्राउड भी बहुत बड़ी है. A few minutes before I left the United States, I talked with Kantigala on the telephone, and he sends his greetings to you, and so did Bill Britt. As you know, Bill Britt's going to be coming to Mumbai in November, and I hope you're excited about that. इंडिया आने से कुछ घंटे पहले इन्होंने अमेरिका में ईडीसी कांतिगाला से बात करी थी फोन पे और उन्होंने आपके लिए ढेर सारा प्यार भेजा है और उन्होंने बताया कि बिल ब्रिट खुद इंडिया आने वाले हैं नवंबर में एफईडी में. तो ये आशा करते हैं कि आप सब लोग जो हैं बड़ी तादाद में लोगों को एफईडी में उनको मिलाने के लिए लेके आएंगे. In the United States, Bill Britt is my Maharaja Guru. अमेरिका में बिल ब्रिट इनके महागुरु हैं. But as far as India is concerned, Kantigala is my Maharaja Guru. लेकिन इंडिया में कांतिगाला ईडीसी इनके महागुरु हैं. You probably heard that Bill Britt has ordered a private jet to bring him to India. आपने शायद सुना होगा कि बिल ब्रिट ने एक प्राइवेट जेट ऑर्डर किया है इंडिया आने के लिए, उनको इंडिया लाने के लिए. And just the inside decoration of that jet is costing over $52 million. और उस प्राइवेट जेट की अंदर की डेकोरेशन के लिए ही सिर्फ 52 यानी $52 मिलियन जो है खर्च करने पड़े उनको अंदर की रिनोवेशन के लिए. The good thing about it is that Bill Britt is paying cash for all of that. मजेदार बात क्या है कि बिल ब्रिट पैसा लगा रहे हैं कैश में प्लेन खरीदने के लिए और प्लेन की अंदर की रिमॉडलिंग के लिए. Well, I'm here today to give you hope
and to make you realize that if I can build this business, you certainly can. मैं आज आप लोगों को ये आशा देने यहाँ आया हूँ कि अगर मैंने ये बिजनेस बिल्ड किया है और मैं बिल्ड कर सकता हूँ तो आप लोग भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं. Last night I said my prayers before going to bed, and I knelt down and I said, God, I have come halfway around the world to speak to these people, and please give me the wisdom that I need to say something that will change their lives. कल रात जब मैं यहाँ बैठा हुआ था अपने होटल में सोने से पहले मैंने प्रार्थना करी थी, हे भगवान, मैं आधी दुनिया का सफर तय करके इंडिया आया हूँ, तो आप अपना ज्ञान मेरे दिमाग में डाल देना ताकि मैं मुंह से वो बोलूं जिससे यहाँ पर आने वाले एक एक आदमी की जिंदगी बदल सके. I just wanted somehow to be able to convey to you what the secret of success is in life. मैं यहाँ पर आके ये चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ कि इस बिजनेस के जो रहस्य हैं, जो सीक्रेट्स है, वो क्या है. 2 weekends ago, I did a seminar for Kantigala's organization in New Jersey, United States. 2 हफ्ते पहले मैंने कांति गाला की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेमिनार किया था न्यू जर्सी में. And we were talking about the fact that many of us arrived in the United States with very little money in our pockets. और हम लोग बातें कर रहे थे आपस में कि हम में से बहुत सारे लोग जो है अमेरिका में आए थे दूसरे देशों से बहुत कम पैसे जेब में लेकर. In that seminar, at least 98% of the people there were from India. और उनके उस सेमिनार में लगभग 98% लोग अमेरिका में जो थे उस सेमिनार में वो लोग इंडियंस थे जो इंडिया से आए हुए थे. There were at least a couple thousand people at that seminar. कम से कम 2-1 लोग तो वहां होंगे कम से कम. And I asked them, I said, when I came to the United States, I had less than $100 in my pocket. And today I'm a multi-millionaire. And I said, how many of you folks arrived in this country with less than $100 in your pocket? And just about every hand went up. और वहां पर मैंने उनसे बोला कि जब मैं इस देश में अमेरिका में आया था तो मेरी जेब में 100 से भी कम डॉलर थे और आज मैं महा करोड़पति हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ. आप में से कितने लोग ऐसे थे जो अमेरिका आए थे और जेब में 100 से भी कम डॉलर थे? और उस हॉल में लगभग सभी लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया था. I'm here tonight to tell you that it doesn't matter how much money you have now. It doesn't matter where you came from. What's important is where you're going. और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज इस वक्त ये मायने नहीं रखता कि आपके पास जेब में कितने रुपए हैं और आप कहां से आए हैं. मायने सिर्फ ये रखता है कि आप इस वक्त कहां जाना चाहते हैं. And if you will simply focus on this business and listen to your great upline diamonds, you will become multi-millionaires just like me and all of the diamonds from India. और अगर आप लोग सिर्फ अपने आप को फोकस कर लें और अपना दिमाग लगाएं अपने अपलाइन डायमंड सीखने में कि बिजनेस कैसे करना है, तो आप भी निश्चित रूप से इस बिजनेस में डायमंड हो जाएंगे और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा आपका भी. See, I grew up in a very primitive and humble environment that maybe some of you folks can identify with. मेरी पैदाइश और मेरी परवरिश हुई थी एक बहुत ही छोटी और एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही पिछड़े हुए माहौल में जो आप में से चाहे कुछ लोग शायद समझ सकते हैं. My folks were missionaries in South and Central America, and that's where I was born, and that's where I grew up as a child. मेरे जो माता पिता थे वो मिशनरीज थे साउथ और सेंट्रल अमेरिका में और वहीं पर मेरी पैदाइश हुई थी और वहीं पर मेरी परवरिश भी हुई थी. When I became a teenager, my folks decided that it was time for me to go to the United States and complete my education. जब मैं टीनेजर हुआ 12-13 साल का, तो उस वक्त मेरे माता पिता ने डिसाइड किया कि अभी तुम्हें अच्छी तालीम की जरूरत है और तुम्हें हमें अमेरिका भेजना पड़ेगा. So I went to the United States,
with very little money, less than $100 in my pocket. तो मैं अमेरिका आ गया और मेरी जेब में बहुत ही कम पैसे थे, 100 से भी कम डॉलर थे. But then I worked my way through high school. लेकिन मैंने इस हाई स्कूल में काम करते करते अपनी एजुकेशन प्राप्त करी. And then I worked my way through college. I majored in mathematics and physics. और कॉलेज में भी मैं कुछ साइड पे काम करता रहता था, कुछ पैसे बना के अपनी कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त करी. और मैं जब कॉलेज से गुजरा तो मेरे पास डिग्री थी मैथमेटिक्स में. And then I went on to medical school, which is another 4 years of education. उसके बाद मैं मेडिकल स्कूल गया जहां पर 4 साल और तालीम हासिल करी मैंने. And then, after talking with some of my professors as to where I should study medicine, many of them discouraged me from even applying to Harvard, which is where I wanted to go to medical school. और जब वो मैंने पढ़ाई खत्म करी तो अपने प्रोफेसर से सलाह मशवरा किया कि अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए किस जगह पे अप्लाई करूं, किस यूनिवर्सिटी में. और उस वक्त सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी थी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. लेकिन मेरे प्रोफेसर्स ने बोला कि वहां मत अप्लाई करो, वहां तो चांस बहुत कम है मिलने का. See, as a child, my mother was my teacher, and I owe so very much to her because she told me over and over that I was the best and that I deserved the best. मेरी बचपन की जितनी भी परवरिश थी और मेरी जो तालीम थी वो घर में मेरी माँ ने करी थी. और मैं बहुत ऋणी हूँ उनका. उन्होंने बचपन में हमेशा मुझे बताया था कि तुम बेस्ट हो और जिंदगी में हमेशा बेस्ट एक्सपेक्ट करना, बेस्ट की उम्मीद करना, जो तुम्हें मिलेगा. And because I believed my mother and I believed that I was the best, I wanted the best, and so I asked what the best medical school in the world was, and everybody agreed it was Harvard Medical School. तो चूंकि मुझे विश्वास था अपनी माँ पर और मुझे ये पता था कि मैं बेस्ट हूँ, सबसे बेहतरीन हूँ और मैं सबसे बेहतरीन चीज़ें लाइफ में चाहता था, तो मैंने सब लोगों की राय के मुताबिक देखा कि सबसे बेहतरीन मेडिकल स्कूल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है और मुझे मन था कि मैं वहीं पर जाके अपनी आगे की पढ़ाई करूँ. तो मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया. And even though many of my professors and my friends discouraged me from applying because they said that Harvard was the best and only the aristocrats could go there, I didn't listen to them. I listened to my mother because she told me I deserved the best. And I applied to Harvard, and with God's help, that's where I went. और हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि वहाँ अप्लाई मत करो. बहुत सारे मेरे कलीग्स ने बोला वहाँ अप्लाई मत करो, वहाँ नहीं मिल सकता, वहाँ की आशा करना भी जो है वो सही नहीं है. लेकिन मैंने उन लोगों की नहीं सुनी, मैंने अपनी माँ की सुनी और मैंने बेस्ट से बेस्ट चाहा और मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया और भगवान की कृपा से मुझे वहाँ एडमिशन मिल भी गया. And the lesson that you should learn for this business is that when you make a decision to do something, don't listen to negative people who tell you that you can't do it. You just do it and prove it to them. और इससे यही सबक मिलता है कि जब आपने जिंदगी में कुछ करने की ठान ली, उसके बाद नेगेटिव लोगों की बातें मत सुनो, उनको सिर्फ करके दिखाओ कि जो आपने ठाना है वो ऐसे होगा. I enjoyed being at Harvard because everyone agrees that Harvard is the #1 medical school in the world. And we knew that Harvard was the best in the world. And we knew that we had been chosen from among the best in the world. And it gave us a good feeling, just a tremendous esprit de corps to know that we were the best in the world. और हार्वर्ड की पढ़ाई जो मैंने करी वहाँ पर वो मुझे बहुत अच्छी लगी. उस दौरान जब मैं वहाँ पढ़ रहा था तो वहाँ हम सब स्टूडेंट्स जो थे, हम सबको ये आभास था कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम लोग जो हैं गिनती के लोग हैं जिन्हें चुना गया है कि इतनी अच्छी पढ़ाई हमें हासिल हो. और हम इसी आभास के साथ बहुत ही मेहनत के साथ वहाँ पढ़ाई हासिल कर रहे थे. When I joined Brit Worldwide and the Brit team and became a diamond in the Brit organization, it was as if I'd experienced a déjà vu because I knew that again I was part of the best in the world.
और जब मैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड में आया और यहाँ पर ब्रिट वर्ल्ड वाइड टीम में डायमंड बना और बाकी ब्रिट डायमंड के साथ उठा और बैठा, उस वक्त मुझे वही अपनी पुरानी फीलिंग याद आ रही थी जो कि जब मैं स्टूडेंट था और हार्वर्ड बिजनेस मेडिकल स्कूल गया था। उस वक्त मुझे महसूस होता था कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन टीम का हिस्सा हूं और दुनिया की बेस्ट टीम जो है वहां बेस्ट लोगों के साथ मैं हूं। I am in the Amway business because of Bill Britt. Because when I got into the business, I was a professor at Johns Hopkins with a lot of status, a lot of arrogance, and I was just totally focused on academic medicine and research. Did not have any interest in making money. मैं इस बिजनेस में बिल ब्रिट की वजह से आया हूं। जब बिल ब्रिट ने ये प्लान दिखाया था मुझे, उस वक्त मैं प्रोफेसर था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में और मेरे पास बहुत स्टेटस था, बहुत नाम था, बहुत शोहरत थी और उसके साथ साथ बहुत ही गुरूर भी था, बहुत ही अहंकार था। और उस वक्त मैं अपनी रिसर्च में और अपने काम में बिल्कुल मशरूफ था और मुझे ये आभास भी नहीं था, कुछ ऐसी जरूरत भी नहीं थी कि मुझे पैसा भी और कमाना है। But then I went to a major function similar to the one that you will be attending in November when Bill Britt comes to Mumbai. And I realized that this business was much, much more than making money. और फिर मैं एक बहुत ही बड़े फंक्शन में गया जैसा कि नवंबर में होने वाला है जिसमें बिल ब्रिट यहाँ आएंगे, और उस फंक्शन में जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत कुछ और है जो कि मैं कर सकता हूँ जो कि अभी नहीं कर पा रहा हूँ। In this business, you'll be able to influence the lives of thousands and hundreds of thousands of people around the world. और वहाँ मुझे पता लगा कि इस बिजनेस द्वारा हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बेहतरीन बनाने का अवसर मिलता है हमें, और हम लोगों की जिंदगी में एक बहुत बढ़िया चेंज लेके आ सकते हैं। I was here in Mumbai September of last year and then went back to the United States, and then in October I went to London to do the Free Enterprise Day for the Brit team. मैं पिछले साल सितंबर 19 को यहाँ इंडिया में था और उसके बाद अक्टूबर में मैं लंदन गया जहाँ पर मैंने ब्रिट वर्ल्ड वाइड का फ्री एंटरप्राइज डे फंक्शन किया। And there I met an individual that just impressed on me the potential for influencing people around the world. I met an individual in London who impressed on me the importance and the potential for influencing people around the और world. वहाँ पर मैं एक व्यक्ति से मिला जिसके द्वारा मुझे पता लगा कि लोगों को प्रभावित करना कितना जरूरी है और लोगों को प्रभावित कितना किया जा सकता है। On Sunday afternoon, I did a 3-hour seminar downtown London at the National Royal Hotel. संडे आफ्टरनून को 3 बजे मैंने लंदन के डाउनटाउन होटल में एक 3 घंटे का सेमिनार किया। And a gentleman spoke with me afterwards and told me that he was a professor at Cambridge University there in London. और वहां पर उस सेमिनार के बाद मुझे एक आदमी आके मिला, उसने बताया कि वो प्रोफेसर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लंदन में। When I first saw this business, I was also professor at Johns Hopkins with a lot of ego, a lot of arrogance, and really looked down on the business. और जब मैंने भी ये बिजनेस ज्वाइन किया था, जैसा आपको बताया कि मैं प्रोफेसर था जॉन हॉपकिंस में, बहुत ईगो थी, बहुत अहंकार था, बहुत गुरूर था अपने आप में। And this professor at Cambridge had the same attitude. Someone showed him the business, and he was irritated that someone had the audacity to show him this business. और ये जो व्यक्ति मेरे पास मिलने आया मीटिंग के बाद, ये उस वक्त मुझे अपनी झलक उसमें दिख रही थी, बिकॉज ये आदमी भी जो था उसमें बहुत ही ईगो था, बहुत ही स्टेटस था प्रोफेसर कैम्ब्रिज का, और बहुत ही झुंझलाया हुआ था वो कि मेरे को किसी आदमी ने प्लान दिखाया क्यों और इस मीटिंग में क्यों लेके आ गया। उससे ये कैसा लगा कि मुझे पैसे की भी जरूरत है।
But the individual who showed him the business invited him to come to the seminar which I was doing on Sunday afternoon at the National Royal Hotel. लेकिन जिस आदमी ने उसको प्लान दिखाया था उसको समझ थी कि उसने उसको सेमिनार में इनवाइट किया जहां पर डॉक्टर हॉल न्यूबॉल बोल रहे थे. When I returned to the United States, I got this email from him. सेमिनार के बाद जब मैं वापस अमेरिका गया कुछ हफ्तों बाद मेरे को ईमेल आई उससे उसी व्यक्ति से. This gentleman had studied business at Harvard Business School before returning to Cambridge as a professor. इस व्यक्ति ने बिजनेस डिग्री हासिल करी हुई थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कैम्ब्रिज में प्रोफेसर बनने से पहले. And this is what he said in his email. He said, "Dear Hal, I know that you met zillions of people last weekend. I am the Harvard Business School guy who spoke with you before and after your presentation." उन्होंने लिखा ईमेल में कि डियर हैल आपने जिलियंस बहुत सारे लोगों से सैकड़ों लोगों से आप मिले होंगे जब लंदन में थे, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में था और आपसे सेमिनार से पहले और सेमिनार के बाद में मिला था. He said, "I just wanted to reiterate how inspirational your comments were to me, especially that someone with your background and intellect had chosen to come into this business and to make it big time." और मैं बहुत ही प्रेरित हुआ आपके सेमिनार के बाद ये देखकर कि आप जैसी क्वालिफिकेशंस का और स्टेटस का एक व्यक्ति इस बिजनेस में आया और उसने इस बिजनेस में वो सब किया जो आपने हासिल किया. इसको देखकर मैं बहुत ही प्रेरित हुआ. This is the sentence that really impressed me. He said, "Not just for the financial rewards, but for the opportunity to better the lives of thousands of people around the world." और उसके बाद उन्होंने उसमें लिखा अगला सेंटेंस कि ना सिर्फ पैसे के लिए लेकिन और लोगों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए इस बिजनेस में आए आप. इस बात से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, बहुत प्रेरणा मिली. This is the opportunity that you have to influence people like this professor who before coming to the seminar did not want anything to do with the business. However, he totally changed his attitude and was very much excited about the business when he left that day. तो इस बिजनेस द्वारा आप लोग ऐसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, जो शुरू में सोचते हैं कि हमें इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे फंक्शंस में आके उन्हें इस बिजनेस की जरूरत महसूस होती है और वो बहुत सारे लोगों की लाइफ बेहतर बना सकते हैं. He said, "As a newcomer and a mature international professional, I really equated my intended approach with everything that you had to say." और उन्होंने आगे लिखा ईमेल में कि मैं एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल हूँ, बिजनेस प्रोफेशनल हूँ और एक बहुत ही मैच्योर आदमी हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस में पूरी तरीके से आऊँ और इस बिजनेस में बहुत कुछ करूँ. Experiences like this make it worthwhile to build this business. इस तरह के जो अनुभव होते हैं, आदमी के एक्सपीरियंस होते हैं, उससे हमारे दिल को बहुत तसल्ली मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगता है. When I got through my studies at Harvard Medical School, I went down to the National Institutes of Health, which is the #1 biomedical research institution in the world. जब मैंने हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई खत्म करी उसके बाद मैं गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि अमेरिका में सबसे #1 इंस्टीट्यूट है रिसर्च के एरिया में in the field of biomedical research. After being there for a number of years, I then moved to Johns Hopkins as a professor of medicine. वहाँ बहुत साल रहने के बाद फिर मैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में गया प्रोफेसर की तरह. And it was while I was at Johns Hopkins that a colleague, a fellow physician who was also professor of medicine at Johns Hopkins, initially showed me the business. और जब मैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में था तो उसी वक्त की बात है कि मेरा एक कलीग जो मेरी तरह डॉक्टर था जॉन हॉपकिंस में, उसने मेरे को ये प्लान दिखाया. Initially, I had no interest
in the business because I was working well over 100 hours a week, just totally focused on academic medicine. जब मैंने प्लान देखा तो उस वक्त मुझे वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज उस वक्त मैं 100 से भी ज्यादा घंटे हर हफ्ते डाल रहा था अपनी एकेडमिक रिसर्च पर. But a couple of months after I initially saw the program, a very good friend who was a high school and college classmate showed me the business again. लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे मेरे एक और दोस्त ने फिर से बिजनेस दिखा दिया. But I was no more interested in the business when I saw it the second time. लेकिन दूसरी बार भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में. The cost of the kit to get started was about $100. And so I told my wife, I said, look, any friend is worth $100. So just write him a check for the kit and put the kit under the bed. उस वक्त एक किट की कीमत लगभग $100 यानी लगभग 4,000 रुपए थी, और मैंने अपनी पत्नी को बोला, देखो किसी भी दोस्त की कीमत 4,000 रुपए से तो ज्यादा ही है, तो क्यों दोस्ती खराब करें. 4,000 रुपए का चेक काट के हमने उनको दे दिया और हम लोगों ने किट खरीद ली. I had no intentions of building this business. I just wanted to get rid of my friend. मेरा इरादा बिजनेस बिल्ड करने का नहीं था, सिर्फ अपने दोस्त से पीछा छुड़ाने का था. But I went to a major function and met Bill Britt, and I realized the potential that there is in building this business. लेकिन मैंने एक एफईडी फंक्शन अटेंड किया जहां पर मैंने बिल ब्रिट को सुना, और उसके बाद मुझे आभास हुआ कि इस बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है. And when Bill Britt comes to Mumbai, you make sure you're there to hear him and take as many people as you possibly can. जब बिल ब्रिट नवंबर में मुंबई आए तो आप जरूर उनको सुनने जाइएगा और अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेके जाइएगा, जिनकी जिंदगी बदल जाएगी. Bill Britt is totally committed to doing whatever it takes to create tremendous growth and success of the business in India. बिल ब्रिट जो है वो बहुत कमिटेड हैं कुछ भी करने को, इससे कि भारत में बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़े और यहाँ पर बहुत सारे डायमंड पैदा हुए, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जिंदगी बदले, बहुत सारे लोग अमीर हों. I was told that Bill Britt has decided to build a coliseum that will seat 15,000 people in Mumbai just for his functions like this. मैंने सुना है कि बिल ब्रिट ने ये निर्णय लिया है कि वो यहाँ पर एक कॉलिसियम बनाएंगे, इंडोर स्टेडियम, जिसमें लगभग 50,000 लोग उनकी टीम के एक साथ बैठ के फंक्शंस अटेंड कर पाएंगे. You can tell when someone is committed to success because he's willing to invest millions of dollars as he has in India to create success for you. जब कोई आदमी सफलता के प्रति कमिटेड होता है, वो इस बात से पता लगता है कि वो अपने पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो लगाने को तैयार है ताकि वो सफलता यहाँ पर लोगों को मिल सके. और इस बात से पता लगता है कि बिल ब्रिट कितना कमिटेड है इंडिया में सफलता पैदा करने के लिए. When I initially heard Bill Britt, I totally changed my attitude towards this business, and I went to my upline, EDC, and told him that I'd made a decision to build this business, to tell me what I needed to do to succeed. जब मैंने बिल ब्रिट को सुना तो मेरा एटीट्यूड इस बिजनेस के प्रति बिल्कुल चेंज हो गया, और उसके बाद मैं अपने अपलाइन के पास गया, अपने अपलाइन ईडीसी के पास, कि मैंने निर्णय लिया कि मैं बिजनेस बिल्ड करूंगा और आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं करूंगा. And 3 months after I went to my upline and developed a program for success, we became direct distributors. और 3 महीने बाद, उस दिन के बाद जिस दिन मैं उनसे अपने अपलाइन से मिला, उस दिन के 3 महीने बाद हम लोगों ने जो प्रोग्राम डेवलप किया था साथ बैठ के, उस पर अमल करके मैं सिल्वर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन गया था. Even though I was working over 100 hours a week, I still did what it took to become a direct distributor in 3 months.
हालांकि मैं 100 से भी ज्यादा घंटे काम कर रहा था हर हफ्ते, लेकिन फिर भी मैंने जो हो सकता था, जो बन पड़ सकता किया ताकि मेरे को सफलता मिले और मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन गया. And it's not that I wasn't busy, because there were a lot of things that I had been doing, and I'm just going to read a couple things here. For example, I was doing a lot of research, and my research had led to well over 100 publications of articles in prestigious medical journals, and had written several chapters and several books. I wrote a book entitled Immunopharmacology of the Lung, which was the standard textbook for immunopharmacology around the world. ऐसी बात नहीं कि मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा था तो मेरे पास टाइम ही टाइम था. मैं बहुत बिजी था, रिसर्च कर रहा था, और जिस दौरान मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रहा था उस वक्त मेरी रिसर्च में मैंने इतना कुछ हासिल किया कि मेरे 100 से भी अधिक पब्लिकेशंस छपे बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल्स में. और उसी दौरान मेरी रिसर्च के दौरान मैंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी, इम्यूनोफार्माकोलॉजी ऑफ लंग्स, जो कि इम्यूनोफार्माकोलॉजी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मानी जाती है दुनिया भर के मेडिकल स्कूल्स में. I was also a diplomat of the National Board of Medical Examiners, and I was certified by the American Board of Internal Medicine and the American Board Subspecialty of Pulmonary Diseases. मैं एम्बेसडर था. You're in trouble. जिस दौरान मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा था उस वक्त मैं अमेरिकन This is too complicated. Just take my word for it. I was busy. हाँ, ये डिप्लोमेट थे नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स के. ये सर्टिफाइड थे अमेरिका बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन से, और ये अमेरिकन बोर्ड सब स्पेशलिटी ऑफ पल्मोनरी डिजीजेस के मेंबर भी रह चुके थे उस वक्त. I was a member of many professional medical societies. ये मेंबर थे बहुत सारी मेडिकल सोसाइटीज के. There's a long list, but I'm not going to read them because it's too difficult to translate. इस लिस्ट पर जो जो एफिलिएशंस और इनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई हैं, अगर वो कोई डॉक्टर देख ले तो उसको मतलब हो सकता है कि उसका दिल थामना पड़े. उसको बहुत क्वालिफिकेशंस है. एक बार Thank you. I was very busy in academic medicine, but I did not use that as an excuse for not building the business. ये एकेडमिक मेडिसिन में बहुत बिजी थे, पढ़ने में, रिसर्च में, लेकिन उन्होंने उस चीज को एक एक्सक्यूज नहीं बनाया बिजनेस ना बिल्ड करने का. When you meet someone who is very busy, show them the business, because those are the people who are the movers and the shakers in life. Those are the people who know how to get things done. जब आप किसी आदमी को मिलते हैं जो बहुत बिजी है लाइफ में, आप उसको ये प्लान जरूर दिखाइए, क्योंकि वो आदमी बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो बिजी है, वो मूवर्स एंड शेकर्स को बिलोंग करता है. ऐसे लोग जो बहुत लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी बदल सकते हैं. ऐसे लोग यदि बिजनेस में आ जाए तो बहुत कुछ करेंगे. Don't look for people who have a lot of time. The reason they have a lot of time is because they're not doing anything in life. ऐसे लोगों को मत ढूंढिए इस बिजनेस के लिए जिनके पास समय है, क्योंकि उनके पास समय है. क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ करने के लायक नहीं है. The busier the people, the more potential they have to succeed, not only in life, but also in this business. जो लोग बिजी होते हैं उनमें काबिलियत होती है कि वो बहुत कुछ सफलता हासिल कर रहे हैं, या फिर वो बहुत कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं इस बिजनेस द्वारा. After becoming a direct distributor, we went on to become emeralds. डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ये सीधे एमरल्ड तक पहुंचे. And then I went to another major function. उसके बाद फिर ये उसी दौरान ये एक और बड़े फंक्शन में गए. And I met folk, distributors,
who are brand new diamonds who went from ruby to diamondship in 1 year. और वहां पर मैं 4 लोगों से मिला, ऐसे लोग जो रूबी से डायमंडशिप बहुत तेजी से गए 1 साल के अंदर अंदर। How many rubies do we have out here? Let कितने me see your रूबीज हैं, hands. कितने रूबी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पर? Terrific. Every single one of you folks can be diamond this coming year. आप सब लोग जो है डायमंड बन सकते हैं इस 1 साल में। I was an emerald at that time, and I said to myself, if these folks can go from ruby to diamond in 1 year, I can go from emerald to diamond in 1 year. तो जब मैंने उस फंक्शन में उनको देखा रूबी से डायमंड जाते हुए 1 साल में, तो मेरे को लगा कि मैं एमरल्ड से डायमंड जरूर जा सकता हूँ 1 साल में। And I went to my upline EDC and I told him that I'd made a decision to become a diamond that year. और फिर मैंने अपने अपलाइन ईडीसी को जाके बोला कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं अगले फिस्कल ईयर में डायमंड जाऊं। He developed a plan for me to succeed, to become a diamond that year. I followed his plan and we succeeded. और फिर मेरे अपलाइन ने मेरे लिए एक प्रोग्राम प्लान बनाया अगले साल डायमंड जाने का। मैंने उस प्लान पे अमल किया और अगले साल मैं डायमंड बन गया। Everybody here has an upline who's willing to help you to succeed. Many of these folks are emeralds and diamonds. They're very successful. Take advantage of their counsel and follow what they suggest. आप सब लोगों के यहाँ कोई ना कोई अपलाइंस हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एमरल्ड्स हैं, और वो आपके साथ बैठ के आपकी सफलता के लिए एक प्लान निर्धारित कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आप सब लोग उनसे सलाह मशवरा करिए, उनसे काउंसलिंग लीजिए और उनके साथ बैठ के प्लान बनाइए और फिर उस पर अमल करिए। My upline diamond is a multi-millionaire, makes over $1 million per year. मेरे अपलाइन डायमंड जो है मल्टी मिलियनर है और वो $1 मिलियन यानी 5 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं हर साल। And he was willing to teach me how to become a multi-millionaire like him. और वो मुझे सिखाना चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक मल्टी मिलियनर कैसे बनूं। I would not have been smart if I did not take advantage of his counsel. मैं बहुत बेवकूफ होता यदि मैं उनकी सलाह मशवरा नहीं लेता। And I would encourage each one of you folk to find your growing upline and counsel with them on a regular basis. और मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगा, प्रोत्साहित करूंगा कि आप लोग अपने किसी ग्रोइंग अपलाइन को पकड़ के बैठिए और उनसे रेगुलर बेसिस पे सलाह मशवरा लेते रहिए, काउंसलिंग देते रहिए कि बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है। There are many struggles that you will go through in becoming a diamond. बहुत से चैलेंजेस आएंगे डायमंड जाने तक रास्ते में। But there are also many serendipities, many benefits of becoming a diamond. लेकिन डायमंड बनने के बहुत सारे साइड बेनिफिट भी होंगे, कुछ ऐसी चीजें जो कि आप अपेक्षा ना रखते हो वो भी आपके साथ होंगी लाइफ में। And when you go on the diamond trips and you're sitting on the beaches of the world, you don't remember the struggles that you had. और डायमंड बनने के बाद जब आप अन्य डायमंड के साथ दुनिया की बेहतरीन बीचों में बैठ के जब मजा ले रहे होंगे तो उस वक्त आपको अपनी चैलेंजेस, अपनी दिक्कतों को कभी याद नहीं कर पाएंगे। As a diamond, you get many all expense paid vacations all over the world at 5-star resorts. डायमंड बनने के पश्चात आपको बहुत सारे एक्सपेंस पेड मुफ्त के ट्रिप्स मिलते हैं दुनिया के बेहतरीन रिजॉर्ट्स में, पूरी दुनिया में। You will also have the opportunity, as we have, to pay off all of our debts. We don't owe anybody anything. आपको डायमंड बनने के बाद ये मौका मिलेगा कि आप बेहतरीन चीजें खरीद सकें कैश पर, अपनी सारे के सारे ऋण चुका दें, कर्जा चुका दें, और कोई भी आदमी कभी भी आपके ऊपर एक भी पैसा उधार, आप किसी की भी आदमी के ऊपर एक भी पैसा उधार नहीं रखेंगे। And we have millions of dollars sitting in the bank to do whatever we want to do. हम लोग ऋण मुक्त हैं और हमारे मिलियंस डॉलर, सैकड़ों करोड़ों रुपए जो हैं बैंक में सेविंग्स में पड़े हुए हैं। You need to take care of your financial needs for the rest of your life.
Because once you have done that, then you can focus on the important things of life. आप लोगों को अपने फाइनेंशियल जरूरतें जो हैं उनको पूरा करना चाहिए जिंदगी भर के लिए, ताकि आपके पास समय हो कि आप कुछ हायर चीजें जिनके लिए भगवान ने आपको पैदा किया है उन पर ध्यान दे सकें. I don't think that God intended for us to use our energies worrying about where money is going to come from to pay for your rent or your house or your car or your debts. मेरा ये विश्वास है कि भगवान ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया कि हम अपनी सारी की सारी एनर्जी लगा दें सिर्फ इस उलझन में कि हम कैसे पैसा कमाएं, ताकि महीने की किश्त पूरी करनी है, गाड़ी की महीने की किश्त पूरी करनी है, कार की वगैरह वगैरह खर्चे पूरे करने हैं. उसने हमें बनाया है किसी और ही पर्पस के लिए. There are many more important things in life to focus your life on. जिंदगी में ऐसी बहुत सी और चीजें हैं जहां पर हमारा ध्यान फोकस होना चाहिए. But you can't do that as long as you're concerned about money to pay for rent and your automobile and your debts. लेकिन हम वहां ध्यान नहीं लगा सकते जब तक हमारी जिंदगी की जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी ना हो और हमारा दिमाग वहां से फ्री ना हो कि पैसा कहां से आएगा अपने खर्चों के लिए. So make a decision to succeed in this business and solve your financial needs for the rest of your life. तो आप लोग ये निर्णय लीजिए कि आप ये बिजनेस करेंगे ताकि आपकी उम्र भर के पैसे की चिंता दूर हो जाए. We know what it takes to succeed and we're willing to teach it to you. But you need to become teachable so that you can learn it. हमें पता है कि इस बिजनेस में सफलता के लिए क्या जरूरी है, क्या करना पड़ेगा, और हम कर भी चुके हैं. लेकिन आपको सिखाएंगे तब जब आप सीखना चाहें और आप में सीखने की इच्छा प्रबल हो. There's a great coach that we had in the United States who coached football. His name was Vince Lombardi. अमेरिका में एक बहुत ही फेमस कोच था जो फुटबॉल सिखाता था. उसका नाम था विंस लोम्बार्डी. And he talked about winning the games of life. और वो सिखाता था लोगों को ना सिर्फ खेल कूद के बारे में लेकिन जिंदगी का गेम कैसे जीतना है. And what he said was the following. और उसने ये बताया, He said, winning isn't everything in life. He said, winning is the only thing. उसने क्या बोला कि जीत सब कुछ नहीं है जिंदगी में, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिंदगी में. And when it comes to the game of life, winning is the only thing. और जब आप जिंदगी का गेम खेल रहे हैं तो उस वक्त जीत जो है वो सब कुछ है आपके लिए. So let me challenge you tonight to make a decision to become a direct distributor, an emerald, and then go into diamondship. तो मैं आज आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि आप लोग इस बिजनेस में सीख कर आगे बढ़े, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बने, एमरल्ड बने और फिर डायमंड बने. And once you become a diamond, you have reached the ultimate winning in life. और जब आप डायमंड बन जाएंगे तो आप जिंदगी में अल्टीमेट विजेता हो जाएंगे. I'm going to break for a few minutes and come back and do some powerful teaching that without question will get you to diamondship. और मैं छोटी सी ब्रेक लेने के बाद वापस आके आपको सिखाऊंगा बहुत ही पावरफुल चीजें जिनसे आप जरूर डायमंड तक पहुंच जाएंगे. So I'll see you in a few minutes. थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे फिर. I just want to take a few minutes and review with you some basic principles of success. मैं थोड़ा समय लूंगा आप सब लोगों के साथ फिर से दोहराने में, रिव्यू करने में जो बेसिक सिद्धांत है इस बिजनेस में सफलता के. So there's some basic principles which were established by God and which govern your success in life. कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जो भगवान के बनाए हुए हैं
क्योंकि आपकी सफलता जिन पर निर्भर है। And once you learn these principles and you apply them to your success, there's no question that you can achieve anything that you want to achieve. और एक बार ये सिद्धांत आप सीख ले और उनको अप्लाई करें बिजनेस में, तो सफलता तो निश्चित रूप से है ही आपके लिए। The basis on which we operate is the following. If one thinks, is this coming through? If one thinks in positive terms, one gets positive results. जो मैं बता रहा हूं उसका बेसिस ये है कि यदि आप सकारात्मक सोच सोचेंगे तो आपको सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। And as far as your Amway business is concerned, when you get positive results, you'll become a direct distributor. और जहां तक एमवे का ताल्लुक है, सकारात्मक नतीजा जो है, रिजल्ट है, उसका मतलब है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। And when you become a direct distributor, as far as I'm concerned, you are a winner, which means you have achieved success. And if you continue to build this business as your diamonds have, you will become rich. और जहां तक मैं समझता हूं, जब आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, उसके बाद आप एक विजेता हैं, आपको सफलता मिली है, और उसके उपरांत अगर आप वो सब काम करते रहेंगे जो आपके अपलाइन डायमंड्स करते रहेंगे, तो आप बहुत ही अमीर बनेंगे। On the other hand, if one thinks in negative terms, one gets negative results, which means, in my opinion, that you will never become a direct distributor. And if you're not a direct distributor, you have lost. In other words, you're a loser. I hate to say that, but you know what I mean. Which means that you are a failure as far as your Amway business is concerned. And you certainly are not going to become rich from your Amway business. और अगर आप इसके विपरीत, अगर आप नकारात्मक ख्यालात दिमाग में लेके आएंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे, तो उसके उपरांत आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसका मतलब इस बिजनेस में है कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे तो हालांकि मुझे ये शब्द इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस बिजनेस के संदर्भ में आप लूजर होंगे, विजेता नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आपको सफलता नहीं, असफलता मिलेगी इस बिजनेस में, और आप अमीर नहीं, आप गरीब ही रहेंगे, जहां है वही बनेंगे, वही रहेंगे। I know that these are some strong statements and some strong terms, and what I need to do is to get your permission before I go any farther to just be able to express myself freely. हालांकि मुझे पता है कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है, बहुत ही स्ट्रांग तथ्य है। कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे कि मैं इतने स्ट्रांग शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए कि क्या मैं स्ट्रांग शब्द बोल सकता हूं आगे समझाने के लिए। Thank you. Let me now talk about 3 basic laws that govern your success in life. मैं आपको 3 बेसिक लॉज के बारे में बताऊंगा जो कि हमारी सफलता जिन पर निर्भर करती है। And the first law that I'd like to talk about is the law of cause and effect. सबसे पहला लॉ जिसके बारे में बात करूंगा वो है लॉ कॉज और इफेक्ट का। कॉज एंड इफेक्ट मतलब करनी और फिर भरनी। And what this law says in essence is that for every effect in life there is a cause. और ये कॉज एंड इफेक्ट का जो लॉ है ये क्या कहता है कि जिंदगी में जो हो रहा है उसके पीछे एक कारण है जिसकी वजह से वो हुआ है। There is no such thing as an accident in life. जिंदगी में एक्सीडेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। Every effect has a cause. जो हो रहा है उसका एक कारण है जो कि जिसकी वजह से वो हो रहा है। If we don't know what the cause is, then we say it's an accident. अगर हमें नहीं पता कि वो कॉज क्या है, किस कारण वो हो रहा है, तब हम उसे कहते हैं कि एक्सीडेंट था, वरना हर चीज जो हो रही है उसके पीछे एक कारण है। It would be better for us to say that we're just ignorant of the cause.
बजाय हम चीजों को ये बोलने कि ये एक्सीडेंट था, हमें ये कबूल करना चाहिए कि हम लोग जो है नासमझ है, हमें नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो शब्द एक्सीडेंट हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। This is good news because once you learn how to control the cause, then you can control the effect. ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बिकॉज इस लॉ, इस कानून के मुताबिक अगर हम अपने जिंदगी के कारणों पे कंट्रोल कर लें तो जिंदगी में जो हो रहा है उस पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। And if you don't like the effect, all you have to do is to change the cause to get the desired effect. और जो इफेक्ट है, जो हो रहा है, अगर वो हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसके अनुकूल जो कारण है उस कारण को, उस होनी को बदल दें, उस कॉज को बदल दें, तो वो जो इफेक्ट है, जो हो रहा है, वो भी अपने आप चेंज हो जाएगा। A corollary to this statement is that thoughts are causes and conditions are effects. इसी के साथ साथ मैं बताऊंगा आपको कि हमारे जो भाव है, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, वो कॉज होती हैं और जो परिस्थितियां होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। I'm going to read just a couple of statements from the book Think and Grow Rich. This is on your reading list. मैं अभी आपको एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा इस किताब में से, थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड के ऑफिस में रीडिंग लिस्ट पर भी है किताब अवेलेबल। This book has created more millionaires than any other book in the United States. इसके किताब ने बहुत सारे लोगों को अमीर बनाया है, जैसा कि किसी किताब ने नहीं बनाया लोगों को। I have read this book over 15 times. मैं इस किताब को 15 से भी ज्यादा बार पढ़ चुका हूँ I am still learning from it. और मैं अभी भी आज भी पढ़ता हूँ इस किताब में से। On page 19, this is what it says about thoughts. पेज नंबर 19 पे कॉजेज, होनी, जो कारण है, उनके बारे में किताब ये बोलती है। It says, truly, thoughts are things, and they're powerful things at that. वाकई में जो ख्यालात होते हैं वो बहुत ही पावरफुल चीजें होती हैं लाइफ में। When they're mixed with definiteness of purpose or a goal, and persistence and a burning desire. जब ख्यालात को, थॉट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं लक्ष्य से, एक क्लियर कट फोकस्ड लक्ष्य से, और साथ साथ एक बहुत ही अंदरूनी पावरफुल डिजायर के साथ। On page 29, here's another powerful statement. पेज 29 पे एक और पावरफुल स्टेटमेंट है। It says, when Henley wrote the prophetic lines that I am the master of my fate, I am the captain of my soul, he should have informed us that we are the masters of our fate and the captain of our souls because we have the power to control our thoughts. इसमें लिखा हुआ है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं और हम अपना जो, हमारी जो आत्मा है उसके कप्तान है। और जब ये चीज लोगों को समझ में आती है, उस वक्त लोगों को ये भी समझ में आता है कि जो असली पावर है, इससे ये कथन सत्य होता है, वो पावर इसमें है कि हम लोगों को भगवान ने शक्ति दी है कि हम अपने भाव, हम अपने ख्यालात पे काबू कर सकें और उन्हें कंट्रोल कर सकें। इसी के द्वारा हम लोग जो हैं अपनी जिंदगी के, अपने भाग्य के मालिक बनते हैं। God has given us control over one thing and one thing only in life, and that's the way we think. भगवान ने सिर्फ हमें एक चीज पे कंट्रोल दिया है इस पूरी दुनिया में, सिर्फ एक चीज पे, वो है हमारे ख्यालात, हमारे भाव। Earl Nightingale said that we become what we think about. अर्ल नाइटिंगेल, जो बहुत ही एक बड़े चिंतक थे अमेरिका में, उन्होंने एक कथन दिया था कि हम वही बनते हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं।
And you are in life where you are because of the way you think. और आज आप जिंदगी में जिस मुकाम पे है वहां पर इसलिए हैं क्योंकि अभी तक आपने जो सोचा था उसका परिणाम अब निकल के आ रहा है. Let's call this individual a rich man, and let's call this individual a poor man. हम लोग दो आदमी की शक्ल बनाते हैं यहाँ पर, और एक आदमी की आकृति जो है उस आदमी को हम कहते हैं अमीर आदमी, और एक आदमी को कहते हैं गरीब आदमी. A rich man is rich because he thinks like a rich man. अमीर आदमी अमीर है क्योंकि वो अमीर आदमी की तरह सोचता है, उसकी तरह भाव आते हैं, उसके उत्पन्न होते हैं उसके दिमाग में. A poor man is poor because he thinks like a poor man. और जो गरीब आदमी हो, गरीब आदमी को गरीब आदमी की तरह सोचता है, और गरीब आदमी के भाव उसके दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं. As long as the rich man continues to think like a rich man, he will be rich. जब तक वो अमीर आदमी के भाव उत्पन्न करता रहता है, वो अमीर रहता है. As long as a poor man continues to think like a poor man, he'll be poor. और जब तक वो गरीब आदमी की तरह के भाव उत्पन्न करेगा, उनके ख्यालात निकालेगा, मन में डालेगा, तब तक वो गरीब ही रहेगा. As soon as the rich man starts to think like a poor man, he becomes poor. इससे ये भी साबित होता है कि अगर अमीर आदमी ने गरीब आदमी के भाव उत्पन्न करना शुरू कर दिया, उसके ख्यालात उसके दिमाग में आ गए, तो वो अमीर आदमी गरीब बन जाएगा. And here's the good news. As soon as the poor man starts to think like a rich man, he becomes rich. इसका विपरीत भी सच है कि अगर गरीब आदमी ने अपने दिल में एक अमीर आदमी के भाव और एक अमीर आदमी के ख्यालात उत्पन्न करने शुरू कर दिए, तो वो गरीब से अमीर बन जाएगा. God has given us absolute, total, and complete control over our thoughts. भगवान ने हमें बिल्कुल पूरी तरीके से नियंत्रण दिया हुआ है एक चीज पर, हमारे भाव और हमारे ख्यालात पर. And that's the only thing that you need in life to succeed. और बस यही एक चीज चाहिए हमें जिंदगी में सफल होने के लिए, बस. Let's talk about a second law, and this is the law of belief. अब ये दूसरा कानून बता रहे हैं, दूसरा लॉ, और वो है लॉ बिलीफ का, विश्वास का. And this law says that whatever one believes with feelings will influence your performance. और ये लॉ क्या कहता है कि आप जिस चीज पे विश्वास रखते हो, बहुत ही पावरफुल भावों के साथ, बहुत ही पावरफुल फीलिंग्स के साथ आप जिस चीज पे विश्वास रखते हो, उससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. Self-limiting beliefs will lead to negative performance. अगर आपके ख्यालात, अगर आपका जो विश्वास है वो आपको अपने बारे में डाउटफुल बनाता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव हो जाएगी. Empowering beliefs will lead to positive performance. और जो आपका जो विश्वास है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, उससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. Let me illustrate what I'm talking about. मैं भी आपको समझाता हूं कि इससे मेरा क्या मतलब है. There's a young man who made straight A's through high school. A young man made A's in all of his classes in high school. एक यंग आदमी है, एक लड़का है जिसने अपने हाई स्कूल में हर क्लास में अव्वल नंबर प्राप्त करे हैं. He applied to his college of choice, and in order to get admittance to that college, he had to take the SAT test, which is the Scholastic Aptitude Test. उसने अपने मनचाही कॉलेज में दाखिला देने के लिए एप्लीकेशन भरी, और उसमें आने के लिए उसको एक एग्जाम देना पड़ा, SAT जिसे कहते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके आधार पर उसको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. He received a letter of acceptance from his college, and they stated that his SAT score was 98 percentile. जब उसको अपने कॉलेज से दाखिले का एडमिशन पत्र मिला, उसमें लिखा हुआ था कि आपके SAT टेस्ट में जो नंबर थे वो 98% थे, परसेंटाइल थे.
This young man did not understand what an SAT score was. He thought it was an IQ test. और उस आदमी को ये नहीं पता था, उस लड़के को, कि ये एसएटी स्कोर क्या होता है. उसको लगा कि शायद जो मैंने एग्जाम दिया था वो एक आईक्यू टेस्ट था. And so he went to college believing that his IQ was only 98. तो वो लड़का जो था वो कॉलेज गया ये सोच के कि वो 98 परसेंटाइल जो है वो मेरा आईक्यू है, यानी मेरा आईक्यू सिर्फ 98 है. If your IQ is only 98, you're not going to make good grades in college. अगर आपका आईक्यू वास्तविकता में 98 है तो आप कॉलेज में कभी भी अच्छे ग्रेड्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे. During his first semester in college, he made straight D's. He failed all of his classes. और वो लड़का कॉलेज के पहले साल में हर कोर्स फेल करता गया. His counselor called him in at the end of the first semester and said, "What's wrong with you? Why are you failing all your classes?" उसके काउंसलर ने उसको पहले सेमेस्टर के आखिर में बुलाया, उसको पूछा कि तुम इतने अच्छे विद्यार्थी हो, सब कोर्स में फेल क्यों कर रहे हो? He said, "Well, you can't blame me because I only have an IQ of 98." उसने बोला कि आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मुझ पे उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि मेरी आईक्यू ही सिर्फ 98 है. The counselor said, "What makes you believe that your IQ is only 98?" उसने बोला कि तुम्हें कैसे विश्वास है कि तुम्हारी आईक्यू 98 है? He said, "Because my admission letter to the college said that my SAT score was 98." उसने बोला क्योंकि मेरे को एडमिशन लेटर आया था इसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इस पर लिखा हुआ था कि मेरा एसएटी स्कोर 98 है. The counselor said, "Young man, an SAT score is not an IQ score." और उसने उसको बोला कि एसएटी स्कोर जो है वो आईक्यू नहीं होता है. A score of 98 percentile means that you scored equal to or better than all the students in North America who took that test. और 98 का स्कोर जो है इसका मतलब है कि आपने कम से कम या ज्यादा स्कोर लेके आए जो बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका में उन सब के मुकाबले में. He said, "Your IQ is 98." He said, "You're a genius. You're one of the smartest students in the school. You should be making A's." उसने बोला कि आपकी आईक्यू 98 नहीं है और साथ साथ आपकी आईक्यू इतनी बढ़िया कि आप इस स्कोर के मुताबिक आपको जीनियस करार दिया जाएगा और आपको तो अपने यूनिवर्सिटी के सब कोर्सेज में टॉप करना चाहिए इस आईक्यू के साथ. Semester, that student made A's in all of his classes. और अगले सेमेस्टर में उसी स्टूडेंट ने हर कोर्स में अव्वल नंबर प्राप्त करे और एक ग्रेड मिला उसको हर कोर्स में. Here is a student who had a self-limiting belief based on totally false information, but it resulted in negative performance. इस केस से ये मालूम होता है कि इस लड़के के शुरू में अपना जो विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, वो अपने अंदर कम था, अपने को झुका देने वाला विश्वास था कि मैं अच्छा नहीं हूं. इसके कारण उसकी परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ा. You say, "How does this apply to my Amway business?" आप पूछेंगे कि इससे मेरे एमवे बिजनेस का क्या ताल्लुक है? If you have self-limiting beliefs, even though they're based on totally false information, they will lead to negative performance. अगर आपका जो विश्वास है अपने बारे में, अगर वो अपने आप को नीचे गिराता है, हालांकि वो जो विश्वास है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये गलत इंफॉर्मेशन पे आधारित है जो सच नहीं है, लेकिन फिर भी झूठी इंफॉर्मेशन पर भी अगर आपको विश्वास हो जाए कि मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ, तो आपकी परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ेगा और आप ये बिजनेस जो है इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे. I know that Amway distributors in India would not say the stupid things that distributors say in the United States. मुझे पता है कि भारत के डिस्ट्रीब्यूटर्स वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो अमेरिका के एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दोहराई. But in the United States, I have distributors who say negative things like, "I'm not good at contacting. I'm not good at showing the plan. I'm not good at sponsoring people." Those are negative
beliefs that are based on totally false information, but they will result in negative performance. अमेरिका में मेरे ग्रुप में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमेशा मुझसे बोलते रहते हैं कि मैं कॉन्टैक्टिंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं नए नए लोगों को लिस्ट पे नहीं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, मैं प्लान ठीक से नहीं दिखा पाता हूँ, मेरा फॉलोअप अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और ऐसे लोगों का हमेशा नकारात्मक विश्वास होता है अपनी काबिलियत पे, जिसकी वजह से हालांकि वो झूठ है लेकिन फिर भी उसकी वजह से उसका दिमाग सच मान के उनका जो परफॉर्मेंस होता है, उनकी जो सफलता होती है उस पर बुरा असर डालता है और वो सफल नहीं हो पाते। Don't ever let me hear you say stupid things like, I'm not good at, or I'm not good at showing the plan, or I'm not good at contacting. मैं कभी भी आपको बेवकूफ़ी बातें बोलता हुआ नहीं सुनूं कि मैं कॉन्टैक्टिंग में अच्छा नहीं हूं या प्लान दिखाने में अच्छा नहीं हूं या मुझसे फॉलो अप नहीं होता है वगैरह वगैरह चीजें। ये सब सच नहीं है बिल्कुल भी। I want you to say empowering things like, I am a sponsoring machine. Everybody I show the plan to gets in. I am a diamond. मैं आप सब लोगों को पॉजिटिव सकारात्मक ख्यालात व्यक्त करते हुए सुनना चाहता हूं और ये बोलते हुए देखना चाहता हूं कि आप लोग बोले कि मैं स्पॉन्सरिंग मशीन हूं, जिसको प्लान दिखाता हूं वो स्पॉन्सर हो जाता है और मुझसे बढ़िया कोई नहीं। Let me talk about a third law that will influence your performance. अब तीसरा लॉ, तीसरा कानून जो कि आपके जिस पे आपकी सफलता निर्भर करती है, And it's the law of expectations. और वो है लॉ एक्सपेक्टेशन का, यानी अपेक्षा का। This law states that whatever one expects with confidence will influence your performance. और ये लॉ कहता है कि हम जिस चीज की अपेक्षा रखते हैं बहुत ही विश्वास के साथ, उससे प्रभावित होती है हमारी परफॉर्मेंस, हमारी काबिलियत, हमारी एबिलिटी काम करने की। If you have positive expectations, you get positive performance. अगर हम हर चीज के प्रति सकारात्मक अपेक्षा रखते हैं तो इससे हमारी परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहेगी। अगर हम हर चीज के बारे में नकारात्मक अपेक्षा रखते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। On the other hand, if you have negative expectations, you will have negative performance. अगर आप हर चीज के प्रति नेगेटिव नकारात्मक अपेक्षा रखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट हो जाएगी। Let me illustrate what I'm talking about with an example. अभी आपको समझाऊंगा उदाहरण के साथ कि मैं क्या कह रहा हूं। Dr. Rosenthal, who is a professor at Harvard Medical School, conducted a study to test the influence of negative expectation on performance. एक व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया नेगेटिव अपेक्षा का प्रभाव आदमी पे टेस्ट करने को। What he did was to go to the West Coast and collaborate with an experiment with one of the principals of a school in San Francisco area. वो वेस्ट कोस्ट में गए और सैन फ्रांसिस्को में एक स्कूल में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो था शुरू किया। The experiment was designed as follows. और वो एक्सपेरिमेंट जो था वो इस प्रकार बना हुआ था। At the beginning of the school year, they called in 3 teachers. स्कूल के शुरू में वो 3 टीचर्स को, अध्यापकों को बुलाएंगे। These 3 teachers' names had been chosen from the population of teachers in the school on a random basis. और इन 3 अध्यापकों के या अध्यापिकाओं के नाम चुने गए थे पूरे स्कूल के अध्यापक या अध्यापिकाओं की लिस्ट में से, बिल्कुल ही रैंडमली, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं था कि इसका चुनना है इसका नहीं चुनना है। They put the names of all the teachers in a basket, and then they pulled out 3 names. सब टीचर्स के नाम जो थे चिट पे लिख के डाल दिए उसमें, और उसमें से 3 टीचर्स अध्यापकों के नाम निकाल लिए। They then called in those 3 teachers and they lied to them. फिर उन्होंने 3 टीचर्स को बुलाया And they told them a lie.
और फिर उन्होंने उन 3 टीचर्स को बुलाया ऑफिस में बारी बारी से और उनके सामने एक झूठ बोल दिया उनको. They said to them, "You are the 3 best teachers in the school, and because of your excellence in performance, we're going to reward you." और उन्होंने उनको बोला कि आप, हमने देखा है कि आप इस स्कूल में 3 सबसे बेस्ट टीचर्स हो और हम लोगों ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया कि हम आपको अवार्ड देंगे आपकी उत्तम शिक्षा पर आपको. We're going to give each of you a class of 30 students who are the smartest students in the entire school. हम आप तीनों लोगों को एक स्पेशल क्लास देंगे 30 स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, और ये 30 विद्यार्थी जो हैं वो हमारे सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे होशियार विद्यार्थी हैं स्कूल के. They said these students are geniuses, they are going to be easy to teach, and they're going to score very high. और ये जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी जो आपको देंगे, ये बहुत ही जीनियस हैं, ये पढ़ाने में और सीखने में बहुत अच्छे हैं, सीखना चाहते हैं, और ये सब के सब जो हैं अपने कोर्स वगैरह में, सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आते हैं हमेशा. They did not tell the teachers how these students were chosen. उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि इन लोगों ने ये जो विद्यार्थी है कैसे चुने 30 विद्यार्थी. But what they did was to take the names of all the students in the school and put them in a basket, and then randomly took out 30 names and gave to teacher number 1, randomly took out 30 names and gave to teacher number 2, and the same to teacher number 3. इन्होंने असल में क्या किया था कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों के नाम डाले चिट में, एक बक्से में और उसमें डब्बे में, और उसमें हिलाकर पहले 30 नाम निकाले, एक टीचर को दे दिए, फिर रैंडमली 30 नाम निकाले, दूसरे को दे दिए, फिर 30 नाम निकाले, तीसरे को दे दिए, बिना सोचे. At the end of the school year, they gave a test to all of the students. और उस स्कूल का जब साल खत्म हुआ तो उन्होंने एक एग्जाम दिया, टेस्ट दिया उन 30 स्टूडेंट्स को तीनों क्लासेस में. The 90 students that were taught by those 3 teachers scored 30% higher than the rest of the school. और वो जो 90 स्टूडेंट्स थे और जो 90 स्टूडेंट्स थे जिन्हें उन 3 अध्यापकों ने पढ़ाया था, उन्हें 30% ज्यादा मार्क्स मिले बजाय एवरेज मार्क्स जो स्टूडेंट्स को मिले थे स्कूल में. So they called in the teachers and they said, "You had a great year. Your students learned a lot. They scored 30% higher." तो उन्होंने उन अध्यापकों को बुलाया और उनको बोला कि आपकी शिक्षा बहुत बढ़िया थी, आपने जो सिखाया विद्यार्थियों को, उन्होंने इतना सीखा कि उनके जो मार्क्स थे वो 30% ज्यादा थे बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में इस पूरे स्कूल में. So the principal, the teacher said, "Well, what you would expect? What else would you expect? Because these are the smartest students in the school. They're all geniuses and they were so easy to teach." और उन अध्यापकों ने, 3 अध्यापकों ने उन इसके मुकाबले में उनको बोला कि आप और क्या उम्मीद कर सकते हो, बिकॉज आपने हमको स्टूडेंट्स इतने बढ़िया दिए थे, ये जीनियस है, सीखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, इनको तो अच्छे मार्क्स मिलने ही थे. The principal said, "I guess we have to tell you the truth." तो प्रिंसिपल ने उन टीचर्स को बाद में बोला कि मुझे आपको असलियत बतानी पड़ेगी अब. These are not the 90 smartest children in the school. In fact, they were chosen randomly from the population of students. ये 30 स्टूडेंट जो आपको दिए थे सबसे स्मार्ट स्टूडेंट्स नहीं थे पूरे स्कूल में, इनको हमने बस रैंडमली चुन लिया था. So the teacher said, "Well, I guess it's because we are the 3 best teachers in the school." तो उन टीचर्स ने जब सुना तो बोला कि हो सकता है कि हम बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जैसे आपने बताया था शुरू में, तो हमारी शिक्षा इतनी अच्छी रही होगी कि इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए लोग. So the principal said, "Well, I guess we need to tell you the rest of the truth." तो प्रिंसिपल ने उनको बोला कि मुझे लगता है कि मेरे को बाकी कहानी भी सुनानी पड़ेगी आपको कि आप वो नहीं हो जो समझ रहे हो आप. You are not the 3 smartest teachers in the school. In fact, your names were chosen randomly from all the teachers. उन्होंने उनको बोला कि आप 3 सबसे स्मार्ट, सबसे बढ़िया टीचर नहीं हो स्कूल में, आपके नाम भी हमने रैंडमली चुने थे एक लिस्ट में से.
Here is a study that was based on totally false information. इस पूरे कहानी में जो विश्वास था लोगों का, जो उनकी अपेक्षा थी, वो बिल्कुल झूठी इंफॉर्मेशन पर आधारित थी. These were not the 3 smartest teachers in the school. ना तो वो 3 सबसे स्मार्ट टीचर्स थे पूरे स्कूल में, And those were not the 90 smartest students in the school. और ना तो वो 90 विद्यार्थी सबसे बढ़िया विद्यार्थी थे पूरे स्कूल के. But because of positive expectations, they scored 30% higher than the rest of the school. लेकिन चूंकि सबको एक सकारात्मक अपेक्षा थी एक दूसरे के प्रति, तो उन विद्यार्थियों ने 30% ज्यादा मार्क्स हासिल करे एग्जामिनेशन में. You say, what does this have to do with my Amway business? और आप पूछेंगे कि इस सबसे क्या ताल्लुक है मेरे एमवे बिजनेस का. It has a lot to do with your Amway business. इससे सब कुछ ताल्लुक है आपके एमवे बिजनेस का. Because in life, you will not get what you want, but you will get what you expect. क्योंकि लाइफ में आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलेगा जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं. And if you expect your downline distributors to succeed in the Amway business, they'll succeed. अगर आप ये उम्मीद रखेंगे कि आपके ग्रुप में सबसे स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं जो सफल हो जाएंगे, तो यकीनन वो सफल होंगे. And if you expect your downline distributors in the Amway business to fail, they will fail. और अगर आप ये उम्मीद रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे कि आपके डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स मूर्ख हैं और वो सफल नहीं होंगे, तो यकीनन वही होगा. And the same applies to you. If you expect to fail, you will fail. And if you expect to succeed, you will succeed. और वही चीज आप पे भी लागू होती है. वही चीज आप पे भी लागू होती है कि अगर आप ये उम्मीद रखेंगे कि आप सफल होंगे तो आप सफल होंगे. अगर आपको ये अपेक्षा है कि आप सफल नहीं होंगे इस बिजनेस में, तो आप सफल नहीं होंगे. See, if one has positive expectations, you will have a positive attitude. अगर आपकी पॉजिटिव सकारात्मक अपेक्षा है तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा. And if you have a positive attitude, you're going to think in positive terms. और अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसकी वजह से आपकी जो ख्यालात हैं, आपके जो भाव उत्पन्न होंगे, वो भी सकारात्मक होंगे. And when you think in positive terms, you get positive results and you become a direct distributor and you're a winner and you're a success and you keep on and you'll become rich. और आपके भाव, आपके ख्यालात सकारात्मक पॉजिटिव होंगे तो आपके जो परिणाम है वो भी पॉजिटिव होंगे. आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, आप डीडी जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी और आप अमीर बनेंगे इस बिजनेस में. On the other hand, if you have negative expectations, you're going to have a negative attitude, which means that you're going to think in negative terms and you'll get negative results and you'll never become a direct distributor and you're a loser and you're a failure and you're going to be poor the rest of your life. और अगर आपकी नकारात्मक अपेक्षा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और आप ये उम्मीद करते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा. आप हर चीज में कमी देंगे, उससे आपके नेगेटिव इफेक्ट्स यानी परिणाम पैदा होंगे. उन नेगेटिव परिणामों का असर यह होगा कि आप डीडी नहीं जा पाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप इस बिजनेस में आप फेलियर होंगे और आप जिंदगी में गरीब बने रहेंगे. I know that's a strong statement, but sometimes strong statements hurt. मुझे पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रांग है और हो सकता है कि ये आपको ज्यादा स्ट्रांग लगे, लेकिन कभी कभी पीड़ा पहुंचाना भी जरूरी होता है लोगों को. I am not going to travel from the United States to India to tell you a lie. I'm going to tell you the truth. मैं अमेरिका से इंडिया झूठ बोलने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ आया हूँ सच बोलने के लिए आपके सामने. See, I am the type of person that I want to know what it takes to succeed, and then I make the decision as to whether or not I want to do it. मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या चीजें हैं जिससे सफलता मिलती है, वो क्या करना पड़ेगा मुझे सफलता हासिल करने के लिए, और फिर उसके बाद ये मेरा निर्णय है कि मैं वो करना पसंद करूँ या ना करूँ.
I'm telling you what it takes to succeed, but then you decide whether or not you want to do it. तो मैंने आपको सब बता दिया सच सच कि इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा. अभी आपका निर्णय है कि आप ये सब करना चाहेंगे या नहीं. I went through all of this in order to make one statement. I went through all of these 3 laws in order to make one statement. मैंने ये सब आपको जो 3 लॉज हैं, कानून है, ये सब समझाए सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए. And this statement will differentiate between winners and losers. और ये जो मैं बोलने वाला हूं इस सब के बाद, इससे जो विनर्स हैं, विजेता हैं, और लूजर्स हैं, उनके बीच में फासला पैदा हो जाएगा. This is the statement, and write it down. ये एक स्टेटमेंट है जो डायमंड बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Winners make it a habit to manufacture positive expectations in advance of the events. जो विनर्स हैं, विजेता हैं, वो आदत बना लेते हैं ऐसे भाव उत्पन्न करने के लिए जिसके परिणाम स्वरूप जो होने वाला है उसके पहले ही उनके दिल में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो होने वाला है वो हो जाता है. What I'm saying is that winners always manufacture positive expectations in advance of the events. Let me go over that again. Winners make it a habit to always manufacture positive expectations in advance of the events. कुछ होने से पहले जो विजेता है वो एक आदत बना लेते हैं कि ऐसे भाव उत्पन्न करते हैं जिससे कि जो होने वाला है वो हो जाता है. See, Vince Lombardi, a great coach, said winning isn't a sometimes thing, winning is an all-the-time thing. विंस लोम्बार्डी जो बहुत बड़े कोच रह चुके हैं अमेरिका में, फुटबॉल के बात बोली थी, हारना कभी कभी होता है लेकिन जीतना एक आदत बन जाता है आदमी की जिंदगी में. You don't just win some of the times, you win all of the times. आप जीतते कभी कभी नहीं है, आप हमेशा जीतते हैं. And the reason you win all of the time is because you always manufacture a positive expectation to win. और आप हमेशा जीतते इसलिए हैं क्योंकि आप हमेशा ऐसे भाव उत्पन्न करते रहते हैं कि जो होने वाला है उसके पहले ही आप उस चीज को उत्पन्न करने के भाव पैदा कर लेते हैं अपने दिमाग में. Now let me shift gears and take a couple of minutes and talk about setting goals and succeeding. अब हम बात करेंगे कि इस बिजनेस में गोल सेटिंग कैसे करनी होती है. And I want to read again from this book, Think and Grow Rich, page 36. और मैं थिंक एंड ग्रो रिच इस किताब में पेज नंबर 36 पे एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा. I would suggest that you check with your upline to see whether he wants you to buy a copy of this book. ये चाहते हैं कि आप अपने अपलाइन से चेक करें कि शायद वो आपके लिए कॉपी खरीद के आपको दे देना चाहें इस बुक की. आप खुद ही पढ़ लें. As I mentioned earlier, I have read it over 15 times. मैं इस किताब को 15 से भी ज्यादा बार पढ़ चुका हूँ. And it's created more millionaires than any other book in the United States. और इस किताब ने सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करे हैं अमेरिका में. And it tells you in here how to achieve your goals. और उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने लक्ष्य कैसे अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. How many folks here have made a decision to become a direct distributor? Let me see your hands. कितने लोगों ने ये निर्णय लिया है कि वो डीडी बनेंगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं? लगभग सभी ने लिया है ये. I'm going to talk to you for the next few minutes. अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा अगले कुछ मिनटों तक. One of my heroes is John Crow. मेरे एक हीरो हैं, जॉन क्रो उनका नाम है.
And when you make a decision to achieve a goal, this is what you go through. जब आप एक निर्णय ले लेंगे, एक लक्ष्य आधारित कर देंगे कुछ करने का, तो ये सब होने वाला है जो आपको बताएंगे भी है. For those of you folk who just raised your hand to become a direct distributor, this is what you need to do. आप जिन लोगों ने भी हाथ खड़े करे थे अभी डीडी बनने के लिए, आपको ये सब करना है जो लिखने वाले हैं ये बोर्ड पे. लिख लीजिए इसको अच्छे से. Number one, make a decision that you will be a direct distributor. पहला कदम आप ये निर्णय ले लीजिए, कुछ भी हो जाए आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे. Number two, you set a goal. उसके बाद आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए. Number three, you develop a plan. उसके बाद आप एक योजना यानी प्लान तैयार करिए वहां तक पहुंचने का. And then number four, focus on your plan. और चौथा, आप अपनी योजना अपने प्लान पर फोकस करिए. And on page 36 of Think and Grow Rich, they go through the steps that you need to follow to achieve your goal. और पेज नंबर 36 थिंक एंड ग्रो रिच में ये स्टेप्स के बारे में बताया गया है, आपको क्या करना है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए. It says, first you need to fix your mind on the exact amount of money that you want. पहले आपको अपने माइंड को फोकस करना है एक एग्जैक्ट यानी बराबर फिगर पे, आंकड़े पे कि आपको कितना पैसा कमाना है, और एग्जैक्ट होना चाहिए एकदम. For those who will be direct distributors, that is 10,000 PV. जिन लोगों ने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है उनके लिए सिल्वर प्रोड्यूसर बनने का मतलब यानी 10,000 पीवी. Now what I'm going to suggest is that you get a 3x5 card and write down these 6 things and take the card around with you all the time and read it at least 3 times per day. और मैं क्या ये रेकमेंड करूंगा, सुझाव दूंगा कि आप एक इंडेक्स कार्ड होता है ना 3x6 का, उसको खरीद लीजिए बाजार से और उस पर ये 6 चीजें जो बताई हुई किताब में वो 6 चीजें लिख लीजिए और इसे हर रोज कम से कम 3 बार पढ़िए डीडी बनने के लिए. Number 2, determine exactly what you will do to achieve your goal. I would suggest that for number 2, that you put eagle and then double eagle. यहाँ पर नंबर 1 मैं उस इंडेक्स कार्ड पे बोलूंगा आप लेके 10,000 पीवी. नंबर 2 उसमें लिखा हुआ है किताब में कि आप ये लिखो कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए. तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप वहां लिख दीजिए ईगल और उसके आगे फॉलोड बाय उसके बाद डबल ईगल 10,000 पीवी तक पहुंचने के लिए. If you don't know the requirements for eagle and double eagle, check with your upline. Number 3, it says, establish a definite date when you intend to achieve your goal. तीसरा क्या है कि आप एक डेट डालो कि आपको कब तक अपना ये लक्ष्य हासिल करना है. This is the date that you will be a direct distributor. और ये डेट आप वो डेट डालिए जब आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं. I am not going to set that goal for you because it's not my goal, it's your goal. यहाँ पर इस डेट की जगह पे क्वेश्चन मार्क है बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप कौन सी डेट डालना चाहेंगे वहां पर अपने लिए. I suggest that you sit down with your upline direct distributor and tell him how much effort you will be putting into the business, and then he can help you set a realistic goal. मैं चाहता हूं कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के उनके साथ बात करें कि आप कितना समय डाल सकते हैं अपने बिजनेस पे, उसके मुताबिक कब तक आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना चाहिए. I can tell you that if you'll give yourself 12 months to become a direct distributor, it will take you 12 months. मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर आपने अपने आप को 12 महीने दिए डीडी बनने के लिए तो यकीनन इसके मुताबिक आप चाहें तो 12 महीने बाद डीडी बन सकते हैं.
If you give yourself 6 months to become a direct distributor, it will take you 6 months. अगर आप अपने आप को 6 महीने दें सिल्वर बनने के लिए तो आप 6 महीने बाद सिल्वर बन सकते हैं. If you give yourself 3 months to become a direct distributor, it will take you 3 months. और अगर आप अपने आप को 3 महीने भी दें सिल्वर बनने के लिए तो वो भी बन सकते हैं. चाहे 1 साल हो, चाहे 6 महीने हो, चाहे 3 महीने हो, आप जब चाहे सिल्वर बन सकते हैं. And Bill Britt has said over and over that once you make a quality decision to become a direct distributor, you'll do it in 90 days. और बिल ब्रिट हमेशा ये कह चुके हैं बार बार कि जब आप एक उत्तम निर्णय लेते हैं, क्वालिटी डिसीजन लेते हैं सिल्वर जाने का, उसके बाद आपको रियली वाकई सिर्फ 90 दिन लगते हैं सिल्वर पहुंचने में. Once I made a quality decision to become a direct distributor and went to my upline, I went direct in 3 months. जब मैंने एक बहुत ही उत्तम निर्णय लिया था सिल्वर जाने का तो मुझे भी वाकई सिर्फ 90 दिन लगे थे अपने अपलाइन के पास जाके बताने के बाद, और मैं सिल्वर प्रोड्यूसर बन गया था. And I was still working over 100 hours a week as a physician. So don't tell me you're too busy. That's garbage. I don't accept that. और उस वक्त जब मैंने निर्णय लिया था तो उस वक्त भी मैं 100 से ज्यादा घंटे काम कर रहा था अपनी रिसर्च में. तो अगर आप ये बोलते कि मैं बहुत बिजी हूं तो आप ये बहाना मुझे मत दीजिए. What I did was to take my noon hour and instead of eating, I would show the plan. मैं क्या करता था कि दिन में खाने के टाइम पे आफ्टरनून में करीब 12 बजे के आसपास टाइम निकाल के लोगों के साथ बैठ कर उनको प्लान दिखाया करता था. That means I was showing the plan at least 5 times per week. इसका मतलब था कि मैं कम से कम 5 बार हफ्ते में जिन दिन मैं काम कर रहा हूं उस दिन दोपहर में एक बार. In 3 months, you're going to need to show the plans at least 7 to 10 times a week. मेरे ख्याल से अगर आपको सिल्वर जाना है बहुत जल्दी तो आपको हफ्ते में कम से कम 7 से 10 बार तो प्लान दिखाना पड़ेगा. You say, well, that's a lot of work. हो सकता है आप बोलें कि ये तो बहुत काम करना पड़ेगा. I know, but so is your job. मुझे पता है आप जॉब में भी बहुत काम करते हैं अपनी नौकरी में. And most of you folk work at least 8 hours a day, plus your transportation is probably at least another 2 hours, an hour each way. So you're slaving for your boss at least 10 hours per day. मुझे पता है कि आप लोग जो है 8 घंटे तो कम से कम नौकरी करते ही हैं हर रोज, और साथ साथ कम से कम 2 घंटे तो बिताते होंगे ट्रांसपोर्टेशन में जाने में आने में. तो ये मिला के कम से कम 10 घंटे तो आप देते हैं अपनी नौकरी में अपने बॉस को हर रोज. Let me tell you what that's going to do for you. You're going to die broke. मैं आपको बताता हूं कि ये सब जो आप अभी तक करते आ रहे हैं इससे क्या नतीजा निकलेगा. आप जैसे हैं वैसे ही मर जाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे. You slave for your boss 10 hours a day to become broke. If you will just take 7 to 10 hours per week and put into this business, you'll become rich. आप 10 घंटे गुलामी करते हैं अपने बॉस की हर हफ्ते, हर रोज 10 घंटे अपने बॉस की गुलामी करते हैं हर रोज गरीब रहने और गरीब मरने के लिए, तो कम से कम 7 से 10 घंटे दे दो इस बिजनेस में हर हफ्ते अमीर बनने के लिए. I did it. I show the plan about 7 times per week and I've become a multi-millionaire. And you can do the same. मैंने भी 7 से 10 प्लान दिखाए हर हफ्ते और आज मैं करोड़पति हूं, और आप भी चाहें तो शुरुआत वहीं से कर सकते हैं. So get together with your upline direct distributor and set a realistic goal for you. तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करके उनके सलाह मशवरा के साथ एक डेट निर्धारित करिए जब आप सिल्वर जाएंगे. Number 4 is to create a definite plan to carry out your desire. नंबर 4 क्या है कि अभी आप एक योजना बनाइए, एक प्लान बनाइए जिसके मुताबिक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. I get together with the people who are serious in my group and I help them establish a plan, and you need to get together with your upline direct distributor and develop a plan for you to succeed. मेरे ग्रुप में जहां मैं काम कर रहा होता हूं नए लोगों के साथ, मैं उनके साथ बैठ के उनकी योजना, उनके प्लान बना सकता हूं सिल्वर तक पहुंचने के लिए, और मैं ये
चाहता हूं कि आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग भी अपने अपने अपलाइंस के पास, ग्रोइंग अपलाइंस के पास जाके पूछें कि मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लान बताओ ताकि मैं भी सिल्वर जा सकूं। Number 5 says to write out a clear, concise statement of the amount of money you want, 10,000 PV for you, the time limit for its acquisition, what you intend to give up for it, and then describe clearly the plan. उसके बाद पांचवी चीज क्या है कि आप एक स्टेटमेंट लिखो, एक टॉक लिखो जिसमें आप ये लिखो कि आपको क्या चाहिए। इस केस में 10,000 पीवी, आप उस चीज के लिए कितना टाइम देने को तैयार हो, इतने महीने, आपको वो हासिल करने के लिए आप क्या छोड़ने को तैयार हो, क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, वो लिखो। और उसके बाद उसमें ये बताओ कि मैं इसको हासिल करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या करूंगा, उसको डिस्क्राइब करिए, उसको लिखिए, उसका विवरण दीजिए। और उसके बाद बहुत ही क्लियर कट उसमें शब्दों में लिखिए कि वहां तक पहुंचने के बाद आपको कैसा महसूस होगा। Number 6 says to read your written statement aloud. It suggests twice a day, but I suggest you read it 3 times a day, morning, noon, and night. और छठी चीज क्या है कि आप उस स्टेटमेंट को जोर से अपने मुंह से बोलिए हर रोज कम से कम 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। उसको पढ़ते रहिए और अपने मुंह से बोलते रहिए। And when you read your statement, you see and you feel and you believe yourself already a direct distributor. और इसी कदम में शामिल होता है कि जब आप उसको 3 बार पढ़ रहे हैं दिन में, तो पढ़ते पढ़ते आप अपने दिमाग में सकारात्मक ख्याल लाइए और सोचिए ऐसे कि ये हो रहा है आपके साथ। आपके सकारात्मक आपकी अपेक्षा पैदा होगी, भाव पैदा होंगे, उन भावों के साथ इसको पढ़िए। You have got to be able to visualize your goal. आपको अपने जो लक्ष्य हैं उनको विजुअलाइज, उनका सशक्त रूप देखना पड़ेगा। Bill Britt says that you have to get there in spirit before you get there in flesh. बिल ब्रिट कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ, बिल ब्रिट कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर आत्मा से पहले पहुंचते हैं और शरीर से बाद में पहुंचते हैं। When John Crow became a diamond, he went across stage and Bill Britt raised his hand as a brand new diamond. When John Crow became a new diamond, जब जॉन क्रो एक नए डायमंड बने थे, वो स्टेज पर से जा रहे थे और बिल ब्रिट को देख के हाथ हिला रहे थे। it's an occasion that you will never forget for the rest of your life. वो एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी घटना है जिसे आप कभी भी भूल नहीं सकते अपनी जिंदगी में। It's one of the greatest experiences that there is in life. डायमंड बन के स्टेज पे जाना और बिल ब्रिट आपका हाथ खड़ा कर रहे हैं, उसका जो अनुभव है वो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं कभी भी। And when John Crow came off the stage, someone said to him, John Crow, what was it like going across stage as a brand new diamond? तो जब जॉन क्रो स्टेज पर से उतरे, बिल ब्रिट ने उनका हाथ ऊपर किया, ब्रांड न्यू डायमंड, जब वो स्टेज पर उतरे जॉन क्रो, तो किसी ने से पूछा कि जॉन क्रो आपको कैसा लगा स्टेज पर खड़े होकर बिल ब्रिट द्वारा अपना हाथ ऊपर करे जाने पर? And John Crow's answer is the secret to your success. और जॉन क्रो का जो आंसर था वही है आपके बिजनेस का रहस्य भी। This is what he said. ये बोला उन्होंने, He said it was no different from the thousands of times that I went across stage in my imagination. जॉन क्रो ने बोला कि जो मुझे लगा वो वही लगा जो हजारों बार मैं कल्पना किया करता था कि मैं स्टेज पे जाऊंगा और बिल ब्रिट मेरा हाथ ऊपर करेंगे, और जो मुझे फील होता था वही फीलिंग आज भी हुई। You have got to visualize your success. आपको अपनी सफलता को विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। You have got to visualize yourself going across stage as a direct distributor and as an emerald and as a diamond. आप लोगों को कल्पना करनी पड़ेगी, विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने आप को स्टेज से जाते हुए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, एमरल्ड की तरह और डायमंड की तरह।
And for those who are really serious, sometime during the next 2 days, you need to come up here and have a picture taken of you on stage as a brand new direct distributor. और जो लोग ये विजुअलाइज कर पाएंगे आने वाले महीनों में वो स्टेज पे आएंगे और उन लोगों की पिक्चर ली जाएगी रिकग्निशन प्राप्त करते हुए एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह. And then put that picture someplace where you see it many times per day, someplace like the refrigerator. ये कह रहे हैं कि आप इस स्टेज पे आके जब कोई ना हो तो अपनी पिक्चर खींच लीजिएगा जैसे कि आप नए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं और फिर उस पिक्चर को लगा लीजिएगा अपने घर में रेफ्रिजरेटर पे, उसको दिन में बार देखिएगा और ये कल्पना करिएगा कि जैसे आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपकी सीट पे पिक्चर खींची गई. And every time you see that picture, you know that you are a direct distributor. और जब भी आप उस पिक्चर को देखेंगे आपको ये महसूस होगा कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं. You need to develop a positive affirmation that will help you believe that you are a direct distributor. आप लोगों को एक पॉजिटिव एफर्मेशन सेल्फ टॉक बनानी पड़ेगी जिससे कि आपको ये लगे कि मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूं. In the book Think and Grow Rich, on page 32, this is what it says. और थिंक एंड ग्रो रिच बुक में पेज नंबर 32 पे ये लिखा हुआ है. It says, whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. आदमी का दिमाग जो चीज पैदा कर सकता है ख्याल के तौर पर, भाव के तौर पर, उस पर विश्वास करे, उसे वास्तविकता में उत्पन्न होते हुए देर नहीं लगती. You can conceive what a direct distributor is like. You saw them going across stage tonight. आप लोगों के दिमाग में ये कल्पना कर सकते हैं कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर स्टेज पे आते तो कैसा लगता है, बिकॉज आपने इतने लोगों को स्टेज पे आते हुए देखा. They look no different than you do. और वो लोग जो हैं शक्ल में, सूरत में आपसे कोई अलग तो है नहीं वैसे भी. But the difference is that they believe that they are a direct distributor. फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें विश्वास है कि वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, इसलिए यहाँ पर हैं. And you haven't gotten to the point yet that you believe. और आप में से बहुत से लोग अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं कि आप लोग ये विश्वास कर सके कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं. It's easy to visualize someone else becoming a direct distributor, but it's more difficult to visualize yourself. कभी कभी बहुत आसान होता है किसी और की कल्पना करना स्टेज पे एक नए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, बजाय अपनी खुद की कल्पना करना कि मैं स्टेज पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आ रहा हूं. You can conceive becoming a direct distributor, but you have got to believe it first. आप ये कल्पना या आप ये सोच सकते हैं कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं खुद स्टेज पर, लेकिन आपको उस पर विश्वास भी करना पड़ेगा बाद में. Page 53 of Think and Grow Rich tells you how to believe it. पेज नंबर 63 पे ये सिखाया गया है कि जो आप सोचते हैं उस पर विश्वास कैसे पैदा करें. It says the following. ये लिखा हुआ है उसमें. It is a well-known fact that one comes finally to believe whatever one repeats to oneself. It is a well-known fact that one comes finally to believe whatever one repeats to oneself. ये बात सच है कि एक आदमी कुछ समय बाद ये विश्वास करना शुरू कर देता है उन चीजों पर जिसे वो बार बार अपने द्वारा दोहराता है, चाहे जो दोहरा रहा है वो झूठ है या सच है. And it doesn't make any difference whether the statement is true or false. If you repeat it over and over and over again, you will believe it. यानी कि अगर जो हम बार बार बोलते रहते हैं अपने मुंह से, चाहे वो सच है झूठ है, अगर उसको बहुत बार दोहराते रहें तो उस पर मन को विश्वास शुरू हो जाता है. When Paul Miller became a diamond, he would repeat to himself thousands and thousands and thousands of times per day, I'm a diamond, I'm a diamond, I'm a diamond, I'm a diamond. जब पॉल मिलर डायमंड गए तो उस वक्त वो दिन में कम से कम हजारों बार अपने आप को दोहरा रहे थे, I'm a diamond, 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 I'm a diamond. And once you repeat it over and over, your subconscious believes it, and once your subconscious believes it, the ball game is over and you have won.
और जब आप बार बार दोहराते रहें और आपके दिमाग को विश्वास हो गया, और एक बार आपके दिमाग को विश्वास हो गया कि जो आप दोहरा रहे हैं उस पर यकीन कर लेता आपका दिमाग, तो खेल खत्म, बस वो आपको मिलने ही वाला है उसके बाद. All you need to do is to change the software that you have in this powerful computer. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने दिमाग के पावरफुल कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चेंज कर देना है बस. And it's important that your self-talk be appropriate. और आपकी जो सेल्फ टॉक है वो भी उसके अनुकूल होनी चाहिए. Let me illustrate what I'm talking about. I have individuals who say, I am going to be a direct distributor. But your computer does not understand the future tense. हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाला हूं, लेकिन जो दिमाग का कंप्यूटर होता है ना, वो फ्यूचर में, भविष्य के टेंस में आप जब कुछ बोलते हैं बनने वाला हूं, वो नहीं समझ पाते. उन्हें सब कुछ हमेशा वर्तमान में समझ में आता है. What you must realize is that you have the most powerful computer sitting up here. आपको ये समझना चाहिए कि आपके दिमाग में सबसे पावरफुल कंप्यूटर विश्व का है. And that's precisely what it is. It's a computer, and you have to program it like you would a computer. और वो कंप्यूटर वास्तविकता में कंप्यूटर ही है जिसे आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा. When I first went to the National Institutes of Health, I spent a couple of years studying multivariate exponential models of survival for patients with cancer. जब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में शुरू में गया, तो मैं शुरू में बहुत सारे मॉडल स्टडी कर रहा था कैंसर की रिसर्च में. And we worked with some very complex equations. और उन मॉडल्स को स्टडी करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस हम इस्तेमाल कर रहे थे. I wrote all my own programs. और मैं उन सब के प्रोग्राम्स लिखता था, कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखता था उन इक्वेशंस की. And I'll just give you a simple equation of a straight line, which is y equals mx plus b. और उन इक्वेशंस में से एक इक्वेशन थी जो मैं बार बार इस्तेमाल करता था. बहुत ही सिंपल इक्वेशन है कि y equals mx plus b. I never said to the computer y will be equal to mx plus b. मैं कंप्यूटर में कभी ये प्रोग्रामिंग नहीं करता था कि y जो है वो mx plus b के बराबर बनेगी. हमेशा इक्वेशन में क्या था कि y equals mx plus b, मतलब ये इसके समान है. And I never said to the computer y was equal to mx plus b. कंप्यूटर में भी लिखता था मैं कि y कभी mx plus b था. I always said y is equal to mx plus b. मैं कंप्यूटर को हमेशा ये बोलता था कि y is equal to mx plus b. Because computers don't understand the past tense or the future tense. They only understand the present tense. कंप्यूटर्स को भूतकाल और भविष्य काल समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ वर्तमान काल समझ में आता है. And when you're programming this computer, if you use the future tense, you will never achieve your goal. और जब आप अपना दिमाग का कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप भविष्य काल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कभी भी सही नहीं कर पाएंगे. Don't say, I will be a direct distributor. कभी भी ये मत बोलिए कि मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा. You say, I am a direct distributor. आप क्या बोलेंगे? मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूं. Because that's the tense that your computer understands. क्योंकि वही एक टेंस है जो कि आपका कंप्यूटर समझ पाएगा. Let me switch gears and just talk a little bit about becoming an eagle. थोड़ा सा मैं अभी टॉपिक चेंज कर दूं और अभी आपको ईगल के बारे में बताऊंगा. मैं I do not have time to go over all the activities of becoming an eagle. मैं आपको ईगल जाने की कुछ गतिविधियों, एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा अभी. However, I would suggest that you get a copy of the sheet from your upline and memorize it. लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये ईगल ब्रोशर को अपने अपलाइन से ले लें और इसे पढ़ें और इस सबको
दिमाग में रट लें। I just want to mention 3 or 4 of the activities. मैं सिर्फ 3-4 एक्टिविटीज के बारे में बात करूंगा। Number 1 activity to become an eagle is that you share the plan. It says here 5 to 6 times per week. सबसे पहली चीज क्या है ईगल बनने के लिए जरूरी कि आपको प्लान दिखाना पड़ेगा खुद 5 से 6 बार, कम से कम 5 से 6 बार हर हफ्ते। That is easy to do. ये तो बहुत ही आसान है। Do what I did. Skip your lunch hour and take that hour and go show the plan. आप वो करिए जो मैंने किया था अपने काम में, कि मैं अपना लंच ब्रेक में प्लान दिखाता था, लंच छोड़ देता था, प्लान दिखाता था हर लंच आवर में। You need to be true to yourself. आप लोगों को अपने आप से सच्चाई बरतनी पड़ेगी। If you work 40 to 50 hours per week for your boss, you ought to be willing to work 5 to 10 hours per week for yourself. अगर आप अपने बॉस के लिए 40 से 50 घंटे काम करते हैं हर हफ्ते, तो आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा अपने खुद के लिए 5 से 10 घंटा लगाने के लिए हर हफ्ते। Let me give you a wake-up call. अभी मैं आपको एक Your boss isn't concerned about your future. आपके जो बॉस हैं उन्हें आपके भविष्य के बारे में चिंता नहीं है। They're not concerned about your financial security. उन्हें आपकी आर्थिक परिस्थितियों के बारे में चिंता नहीं है। They're not concerned about the financial security of your family. उन्हें आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी चिंता नहीं है। If anything happens to you, do you think they'll continue to pay your family your salary? अगर आपको कुछ हो जाए तो आपको लगता है कि आपके बॉस आपकी परिवार को संभालेंगे? Forget it. कभी नहीं होगा ऐसा। Shakespeare said the following. Shakespeare ने एक बार कहा था, he said, and this above all, to thine own self be true, and it must follow as the day the night, that thou canst then be false to any other man. शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि एक चीज जो आपको हमेशा करनी चाहिए वो क्या, कि अपने से झूठ कभी मत बोलो। दुनिया के सामने कुछ भी हो, लेकिन अपने से हमेशा सच्चाई बरतो, और above all be true to yourself. हमेशा अपने साथ सच बोलो। Develop yourself some financial security. तो अगर आप कहते हैं कि मैं ईगल बनूंगा, तो आपको कम से कम सच्चाई बरतनी पड़ेगी कि आप प्लान दिखा रहे हैं खुद अपने हाथों से, कम 5 से 6 बार हर हफ्ते। And you do this by becoming an eagle and then a double eagle. और इससे आप ईगल और फिर डबल ईगल जाने में समर्थ होंगे। Let me take a minute to talk about activities 2, 3, and 4. अब मैं आपको सेकंड, थर्ड और चौथी एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा। Number 2 is to attend all functions. नंबर 2, आपको हर सेमिनार और फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा। Number 3 is being on standing order tapes. नंबर 3, आपको स्टैंडिंग ऑर्डर टेप पे आना चाहिए। And Number 4, be on standing order books. और नंबर 4, आपको बुक ऑफ द मंथ क्लब जो है उस पे आना चाहिए कि आप हर महीने ब्रिट और वाइट द्वारा रिकमेंडेड बुक पढ़ सकें। You need to attend all functions. आप लोगों को हर फंक्शन अटेंड करने की जरूरत है। Don't depend on listening to a tape that was made during the function. आप इस फंक्शन पे डिपेंड मत करिए, और इसका जो टेप निकलेगा इस फंक्शन का, उस पे डिपेंड मत करिए। Not all the talks which are given at a major function come out on tapes. एक फंक्शन में सारी चीजें जो बताई जाती हैं वो ये जरूरी नहीं है कि उसको टेप पे लेके आया जाए बाद में। And even though tapes are very important, they're critical to your success, you do not get the information from a tape that you would being at a function. हालांकि टेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी हैं आपकी सफलता के लिए, लेकिन टेप पे हर चीज की इंफॉर्मेशन जो फंक्शन में होती है वो नहीं मिलती। There is a lot of information that's going back and forth between you and me right now.
हमारे और आपके दरमियान अभी इसी वक्त बहुत सी चीजें हो रही हैं जो कि मेरे बात करते करते हो रही हैं, मेरे बोलने के ढंग से, मेरे हाथों के हिलने से, मेरे बॉडी से। This exchange of information right now is about 10% verbal and 90% subconscious. अभी इस वक्त जो मैं इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूं आपको, आपके सामने खड़े होकर, ये इंफॉर्मेशन तो आपके दिमाग तक जारी है, ये केवल 10% मेरे शब्दों। That's why it's so important to use your own products. इसीलिए इतना जरूरी है कि आप इस बिजनेस में अपने खुद के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। Because if you're showing someone the plan and you tell them how good your products are, but you're using another brand product, that person's subconscious can detect that you're not being honest with them. यदि आप प्लान दिखा रहे हैं लोगों को और ये बता रहे हैं कि एमवे के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और उसका अवचेतन मस्तिष्क ये सवाल उठा रहा है प्रोस्पेक्ट का कि भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, टिकाऊ हैं, सस्ते हैं वगैरह वगैरह, आपके दिमाग में से ऐसी वाइब्रेशंस उठेंगी अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे आदमी को ये आभास हो जाएगा कि आदमी मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है, बोल कुछ और रहा है लेकिन विश्वास नहीं है। People can read you like a book, and if you try to deceive them, their subconscious detects it and they will not get in the business with you. लोगों का अवचेतन मस्तिष्क जो है वो आपको, आपके व्यक्तित्व को एक किताब की तरह पढ़ लेता है। आप अगर चाहें कि उनको थोड़ा सा गुमराह कर दें, एक्टिंग करके कुछ करके, उनका जो अवचेतन मस्तिष्क है वो आपके सारे सिग्नल पढ़ के समझ जाता है कि आप उनको थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको विश्वास नहीं करते हैं और बिजनेस में नहीं आते हैं। And that's why it's so important for you to do 100 PV per month, and a lot of that comes from using your own products. इसीलिए ईगल जाने के, डबल ईगल जाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद पर्सनली 100 पीवी हर महीने करिए, क्योंकि अगर आप खुद पर्सनली 100 पीवी हर महीने करेंगे तो वो तभी होगा जब आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स अपने घर में अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। As you know, there are 8 steps, 8 activities जैसे कि to आपको become an पता है eagle. कि 8 स्टेप्स होते हैं। Become teachable, 8 कोर स्टेप्स में जो 8 स्टेप्स होते हैं उसमें नंबर 7 और नंबर 8 है। नंबर 7 है टीचेबल, मतलब आप सीखना चाहते हैं हमेशा आप। I just want to talk about those 2 last activities and then we're through. मैं बस इन दोनों के बारे में बातें करूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा यहीं पर ही। I got in this business and I was a very good physician. जब मैं बिजनेस में आया तो मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। I knew what I knew and I knew what I did not know. मुझे पता था कि मैं क्या जानता हूँ और मुझे पता था कि मैं क्या नहीं जानता हूँ। And that's very important as a physician. और डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि वो क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। Because if I don't know what I don't know, I can hurt a lot of patients. क्योंकि एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह अगर मुझे ये सब नहीं पता कि मैं क्या नहीं जानता हूँ, तो जो नहीं जानता वो करने की कोशिश में मैं कभी कभी पेशेंट्स को चोट पहुंचा सकता हूँ। So it's very important for you to know what you know and what you don't know. तो इसलिए आप सब लोगों के लिए भी जरूरी है जानना कि आपको क्या पता है और आपको क्या नहीं पता है। When I got in this business, I knew what I did not know about Amway. I didn't know anything. जब मैं एमवे बिजनेस में आया तो मुझे ये पता था कि मैं एमवे बिजनेस के बारे में नहीं जानता हूँ कुछ भी, और ये मुझे पता था। If you're in the business, chances are you don't know anything about this business. अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो ये सच है कि आप इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। I was willing to humble myself and become teachable and learn from my upline. मैं इस बिजनेस में आने के बाद रेडी था अपने आप को सर झुका के सीखने के लिए कि मुझे लोग सिखा सके कि मुझे बिजनेस में क्या नहीं पता है वो मैं सीख सकूं। And if you're going to succeed in this business, you're going to have to humble yourself and become teachable and learn from your upline. यदि आपको भी बिजनेस में सीखना है, सफल होना है, तो आपको भी थोड़ा सा मानसिक रूप से झुकना पड़ेगा, ये कबूल करना पड़ेगा कि मुझे सीखना है, मैं एक विद्यार्थी हूं, ताकि आपको सिखाया जा सके।
The last thing I'll talk about is to be accountable. आखिरी चीज इसके बारे में बात करेंगे वो है अकाउंटेबिलिटी। I'll go back to my hero, John Crow. मैं अपने हीरो जॉन क्रो के बारे में दोबारा बात करूंगा। He tells the story of meeting with a group of diamonds. वो एक कहानी बताते हैं हमेशा जिसमें वो एक डायमंड्स के ग्रुप में थे And one of the diamonds was talking about accountability. और उनमें से एक डायमंड जो था वो अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहा था। And he said, if you lose money, you haven't lost anything. Just make it back. और वो डायमंड कहता है कि अगर आपने पैसा खो दिया तो आपने कुछ नहीं खोया, आप पैसा दोबारा कमा सकते हैं। The first $1 million is the most difficult. Once you learn how to make money, it's a piece of cake. पहला करोड़ रुपए कमाना मुश्किल होता है, उसके बाद अपने आप आते हैं वो। So if you've lost some money, don't worry about it. Just make some more. तो वो कहते हैं अगर आपने पैसा खो दिया इस बिजनेस में कोई बात नहीं, और आ जाएगा पैसा। If you lose a friend, you've lost something. अगर आपने एक दोस्त खो दिया तो आपने काफी कुछ खो दिया। But if you lose your word, you have lost everything. अगर आपने अपनी जबान खो दी तो आपने सब कुछ खो दिया। Your word has got to become your bond and your sacred trust. आपका जो शब्द है ना वो किसी डीड या एफिडेविट से ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए। And when you tell your downline and upline that you're going to do something, you should do it. अगर आपने किसी डाउनलाइन को बोला है कि मैं ये करूंगा तो बस पत्थर की लकीर वो हो जाना चाहिए। Once you succeed in this business and you become a diamond like myself, you speak to hundreds of thousands of people per year. जब आप एक डायमंड बनेंगे मेरी तरह तो आप हजारों लाखों लोगों से हर साल बात करेंगे स्टेज से खड़े होकर। And people are depending on you for their success. और लोग जो हैं वो आप पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए। So you have got to become accountable, and your word has got to be your bond and your sacred trust. और आप लोगों को उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द जो हैं वो आपकी डीड है, आपका ट्रस्ट है। आपने कह दिया तो वो लिख ले, हो जाएगा। When I told Kantigala that I would come to Mumbai to do this seminar, he did not lose any sleep. He wasn't concerned that I may not show up. जब मैंने कांतिकाला को ये बोल दिया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ सेमिनार करने के लिए तो कांतिकाला की रातों की नींद नहीं उड़ गई कि भाई वो कह रहे हैं आएंगे, पता नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे। Because once I gave him my word, he knew that I was accountable. जब मैंने उनको अपनी जबान दे दी कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, कंफर्म कर दिया, इसका मतलब है कि दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, मैं इंडिया आ रहा हूँ इस तारीख में। This business is built on trust. ये बिजनेस जो है ये विश्वास के आधार पर बिल्ड होता है। Nobody is nobody's boss. कोई भी आदमी किसी का बॉस नहीं है यहाँ पर। People don't get in this business to get a boss. They get in this business to get rid of a boss. कोई भी आदमी इस बिजनेस में एक नया बॉस लेने के लिए नहीं आता है, वो बिजनेस में आते हैं अपने बॉस से छुटकारा पाने के लिए। And don't ever try to boss your people because it will not work. और कभी भी इस बिजनेस में अपने डाउनलाइंस को बॉस करने की कोशिश मत करिए क्योंकि वो काम नहीं करेगा। You have to develop a relationship of trust. इस बिजनेस में अपने डाउनलाइन के साथ आपको एक विश्वास का संबंध स्थापित करना पड़ेगा। And just remember that your word is your bond and your sacred trust, and that's what will lead you to success in this business. बस ये समझ लीजिए कि इस बिजनेस में आपके जो शब्द है, आपकी जो जबान है, वो आपके और आपके डाउनलाइन के बीच में एक बॉन्ड है, एक ट्रस्ट है, एक डीड है, जिसे आप कभी भी वायलेट नहीं कर सकते, झुटला नहीं सकते हैं। My time is up, and I just want to salute and congratulate all of the new pin winners that went across stage tonight. मेरा समय खत्म हुआ। मैं आप सब लोग जो स्टेज पे आए थे उन्हें बधाई दूंगा और उन्हें सलूट करूंगा। I am proud of you for your accomplishments. मुझे गर्व है आप लोगों की सफलताओं पर। You have the best leaders in the entire world of Amway. आप लोगों के पास इंडिया में बेस्ट लीडर्स हैं एमवे की दुनिया में।
All of your upline directs and emeralds and diamonds are the best in the world. आप लोगों के एमरल्ड्स और डायमंड्स जो हैं वो बेस्ट डायमंड्स हैं इस दुनिया के. Don't take them for granted. उन लोगों को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना ले. Make sure you listen to them because they will help you succeed in life. उन लोगों की बातें सुनिए बिकॉज वो आपको सफलता के चरण तक पहुंचाएंगे. I enjoyed being with you, and in the words of General MacArthur, I'll be back. I love you. Goodbye. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of any other corporate entity. Purchase of this product is optional. Purchase of future business tools can be discontinued at any time. Thank you very much.